I thank Professor Muhammad Atiq for having invited me to exchange a few of my thoughts and ideas on this very important topic, holistic and multidisciplinary education. As a student of Benares University, way back 1972 to 1977 for 6 years, I witnessed holistic and multidisciplinary education at BHU. As a teacher also at NIT Warangal, I witnessed implementation of holistic and multidisciplinary education. Whatever I am going to discuss is based on my experience, my practical experience. I am sharing with all of you. With this brief introduction, I shall proceed with the presentation of my lecture in the form of a PPT. So the topic of today's lecture is holistic and multidisciplinary education and choice of students. I start with the quotation by great educationist, artist, and also poet and philosopher, Rabindranath Tagore, who was a Nobel laureate in literature at the beginning of 20th century for his writings on Gitanjali. He says, the highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence. Look at this point, sir. Makes our life. सर Yes, sir. हाँ सर, प्लीज हिंदी में बात कीजिए ना. हिंदी में हम समझ सकता हूँ. अच्छा, बोल नहीं सकता हूँ. बीच बीच में बात. I shall use simple English language. Okay, sir. Simplest possible English language. Okay. Right. So our life in harmony with all existence. When we say with all existence, with people around us, and with all the living species in nature. So that is possible only with holistic and multidisciplinary education. Rabindranath Tagore founded Vishwabharati in the year 1921 in order to provide holistic education to the students of higher education. In the year 1951, Vishwabharati became a central university by the Act of Parliament, and Prime Minister is the Chancellor of this university. Then I would quote Pandit Madan Mohan Malaviya on education. All these programs are conducted under the Malaviya mission. So the same Malaviya, Pandit Madan Mohan Malaviya, he believed in holistic education. He says holistic education means training of mind, body, and spirit of the students. Look at this point, sir. Training of mind, body, and spirit
The third word is spirit of the students. He founded Benares Hindu University in Varanasi, BHU, way back in 1916 to provide holistic education, in which I studied both my master's and doctoral programs. BHU is still a standing example of implementing holistic and multidisciplinary education, sir. Then I shall proceed with quoting Sri Aurobindo's educational vision. Sri Aurobindo's educational vision was a symphony of holistic growth. Again, look at here, sir. Nurturing the body, the mind, and the spirit of the students. His vision illuminated the path to become all-rounded and enlightened individuals. Sri Aurobindo International Center of Education at Pondicherry was founded on the educational philosophy of Sri Aurobindo. Many integrated schools have been established all over India based on the educational philosophy of Sri Aurobindo to provide holistic education, training of mind, body, and spirit. Then I would quote Swami Vivekananda on education. He says, education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested all your life. We must have life building, man making, and character making assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. Vivekananda Kendra Vidyalaya or VKV is the academic wing of Vivekananda Kendra, an organization based on Swami Vivekananda's preachings of life reforming principles. VKV operates a chain of schools in different states of India under the project Vivekananda Kendra. All these schools provide holistic education. Then Mahatma Gandhi and education. Right. He has written Nayathalam. He has his own philosophy of education. He says, by education, I mean an all-round drawing of the best in child and man. Again, in body, mind, and spirit. Gandhi also says, in body, mind, and spirit. Many educational institutions were founded in India based on the Gandhian philosophy of education. Gandhigram Rural Institute in Tamil Nadu is a standing example which has been founded in the year 1956 in order to provide holistic education. It was declared as deemed to be university in the year 1976 by the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi, by UGC. Then J. Krishnamurti on education. He says, reimagining education. We have to reimagine education. Cultivating holistic human beings. We have to reimagine education to cultivate holistic human beings. Based on the educational philosophy of J. Krishnamurti, several schools were founded all over the world to provide holistic education. For the school, for example, the school at Rishi Valley near Madanapalli, Andhra Pradesh,
is well known to implement holistic education. Then Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the Vice Chancellor of Benares University and the first Vice President of India, and known to be great teacher, great philosopher. Teachers should be the best minds in the country. He is of the opinion. He also says education should be imparted with a view to the type of society that we wish to build. We are working for a modern democracy on the values of human dignity and equality. Human dignity and equality. These are only ideals. We should make them living forces. Our vision of the future should include these great principles. You see, dear friends, what is the common point you observe in all the quotations by these great educationalists and thinkers and philosophers? What is the common point? The common point is holistic education means training of mind, body, and spirit. That is holistic education. In one sentence, training of mind, body, and spirit. Training of mind and body is well understood by all of us. In the same meaning, training of mind means all the theory courses in the curriculum, all the assignments and all that. Training of body, we understand physical exercises, including yoga and all that. All of us understand with the same meaning. But the problem is training of the spirit. I have gone to the literature to see how many viewpoints are there on training of spirit. To my surprise, I found 26 different viewpoints on spiritual education. Right? So which concept, with what meaning, with what definition we should implement in colleges and universities? Colleges and universities, you have teachers, students, other staff, the principal or director or vice chancellor. They may have different faiths. They may belong to different religions. Some believe in God, some do not believe in God. Which definition can suit commonly to all stakeholders of these colleges and universities? I pondered over, I thought over very deeply about it. Then I thought the definition of secular spirituality is most suited for implementation in colleges and universities. Therefore, in my lecture, I consider secular spirituality as spiritual education. What is the secular spirituality? I shall explain now. This is a very important point, takeaway from my lecture. What is secular spirituality? What should be secular spiritual education in colleges and universities? Secular spirituality is the adherence to a spiritual philosophy without adherence to a religion. You may belong to a religion, no issue. You need not belong to a religion also. You may belong to any religion, no issue. But when you talk about secular spirituality,
is the adherence to a spiritual philosophy without bothering about religion or anything else. That is secular spirituality. Secular spirituality emphasizes the inner peace of the individual rather than a relationship with the divine. Inner peace of the individual rather than a relationship with the divine. Secular spirituality is made up of search for meaning outside the religious institution. It considers one's relationship with self, other human beings in the society, and also nature. What does secular spirituality consider, sir? Secular spirituality considers one's relationship, your relationship, my relationship with ourselves, other human beings in the society, and also nature. That is secular spirituality. There is no issue. You can implement with this meaning in colleges and universities where the stakeholders belong to different religions, different faiths, believing in God, not believing in God, and all that. You can use this definition and implement. According to American philosopher Robert C. Solomon, spirituality is coextensive with religion. As I mentioned earlier, you can be religious. No issue, sir. But secular spirituality means it considers your relationship with yourself, others in the society, and nature, that may harmonious existence with all the species in the nature. Another point, it is also not incompatible with or opposing science or scientific outlook. You can have scientific outlook. You can have scientific temper. You can be rationalistic. Still, you can understand yourselves. You can have harmonious relationship with other human beings and also nature. These two do not contradict with each other. Naturalized spirituality is spirituality without any need for otherworldly. You talk about this world. You talk about environmental sustainability. You talk about protection of nature. You talk about peace in the world. You talk about inner peace in yourselves. Right? This is important. This is spiritual education. Spirituality is one of the goals, perhaps the ultimate goal of philosophy, he says. Sir, I think I have made you understand what kind of spiritual education we have to implement in colleges and universities. Therefore, holistic education, now I am summing up. What is exactly holistic education? If somebody asks you, tell me briefly in 1 minute, what is holistic education? It includes cognitive domain related to thinking process, related to mental process. Psychomotor domain related to physical activities in learning, your lab courses, your field studies, all that. Physical education, training related to body, games, sports, physical exercises, including yoga. And also secular spiritual education related to understanding of self, relationship with nature and others,
human values, and meditation. All this is included in holistic education, which can be implemented in colleges and university. Benares University is implementing it even today. After the existence of 109 years, still it is able to implement. There is no distraction of its philosophy of the founder of the university. When holistic education is implemented in schools, colleges, and universities, individuals are truly educated and live in harmony with all existence around them. Holistic education only can be said as education in its true sense. Holistic education includes design of multidisciplinary curriculum, innovative and flexible curriculum, and its implementation by providing the necessary infrastructural facilities and using the appropriate pedagogical practices. Now, up to this, any questions, any reflections up to this, sir, from your side? Let it be interactive session. You have your own viewpoints. You have your own experience. Let us discuss. Let us understand. Let us get clarified from each other. Any reflections, any queries, any questions up to this? You can ask me in Hindi also, but I will answer in English. I can understand Hindi. Okay. Holistic education was implemented. You can interrupt me anytime, sir. You can unmute yourself and ask your question. You can interrupt me anytime. It's not one-way traffic. Holistic education was implemented in ancient universities in India. For example, in Takshashila, which is also called Taxila, and Nalanda. Takshashila dates back to 5th or 6th century BC to 5th century AD. Later it was destroyed. It was established in Gandhara, now in Pakistan. The Vedas and the 18 arts, which included skills such as archery, hunting, and elephant lore, were taught in addition to its law school, medical school, and school of military science. The Ayurvedic healer Charaka studied at Takshashila only. Ardhashastra by Chanakya was composed at Takshashila only. Another great university, old university, is University of Nalanda, old Nalanda, not the present Nalanda. It was functioning during 5th century to 12th century AD. It was one of the achievements of the ancient period of field of education. It was one of the world's first residential universities. It had over 10,000 students and 2,000 teachers on the campus, with a faculty-student ratio of 1:5, which no institution in the country has the faculty-student ratio of 1:5. No university right now. Students studied science, astronomy, medicine, and logic as diligently as they applied themselves to metaphysics, philosophy, Sankhya Shastra, Yoga Shastra, the Vedas, the scriptures of Buddhism, foreign philosophy, transcending ethnic and national boundaries. The university attracted peoples and scholars from Korea, Japan, China, Tibet, Indonesia, Persia, Turkey, and other parts of the globe. It was an international university. Nalanda represents the concept of the university of the ancient period. That concept is relevant even today, as seen in NEP 2020.
Now, I have discussed holistic education. Now, I'm going to explain the terms multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary education. This is another very important concept, which is a takeaway from my lecture. What do we understand by multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary education, my dear friends? Let us discuss. When we say multidisciplinary education, it implies the study of an academic program consisting of courses from multiple different disciplines at the same time. Different courses. Computer science and engineering, BTech, for example. You have courses in mathematics, physics, chemistry, basic electrical engineering, basic electronics engineering, English language, Hindi, in some universities instead of English. So many courses other than computer science and engineering. So you have courses from multiple different disciplines. Perspectives from different disciplines create a broader understanding of the major disciplines of the academic program. The student crosses the boundaries of the disciplines. The student, after having exposed to knowledge from different disciplines, he crosses the boundaries of the disciplines. Whereas the disciplines keep their own identity. Mathematics keeps its identity. Physics keeps its identity. Basic electrical engineering keeps its identity. But student crosses the boundaries of the discipline and will have a very broad knowledge base, which is important for solving complex problems, real-time problems, real-world problems. Therefore, in undergraduate program, you all the colleges and universities have multidisciplinary education, courses from different disciplines. Disciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary domains of learning are depicted diagrammatically in the next slide. Yes. Here you see top left to me. For you, it is top right. Disciplinary. It means single discipline. Some certificate courses, some diploma courses, single discipline. Whereas multidisciplinary, I have represented by only two circles, purple and green. You imagine here about 45 different courses consisting, drawn from about not less than 10 to 12 disciplines, 10 to 12 different disciplines. Multidisciplinary program, multidisciplinary, all UG programs are multidisciplinary in nature. You see here, each discipline keeps its own identity. There is no intersection of the disciplines. There is no integration of the disciplines. There is no crossover of the disciplines. They keep their own identity. Then, interdisciplinary, the bottom left to me, as I am showing by this indicator, interdisciplinary, right? That yellow region between the purple and green, you have the interface, that is yellow region. That yellow region represents interdisciplinary domain of knowledge.
It is different from purple. It is different from green. But it is influenced by the two parent disciplines, purple and green. But it itself is a different domain of learning. It is totally different from either of the parent disciplines. That is interdisciplinary courses. You have interdisciplinary courses. You have interdisciplinary academic programs in your curricula. That is the meaning of interdisciplinary. Then transdisciplinary, here also intersection of the two disciplines. But you see the white region, it transcends both the disciplines, transcends. It is much above the two disciplines. It's a new field of knowledge, original field of knowledge, which is born by the intersection of these two disciplines in this manner. That is transdisciplinary domain of knowledge, which is based on research from different faculty and students from different disciplines. New knowledge is born, original knowledge is born, which nobody ever thought of. That is how knowledge is growing and growing by the great contributions of scholars, faculty members like you, right? New knowledge, original knowledge. And that is responsible for change of civilization. That is responsible for solving many problems of the society, whatever transdisciplinary or interdisciplinary or multidisciplinary research. For human welfare, there are many discoveries, original discoveries, breakthroughs because of this kind of education. For some professionally, vocationally, and technically oriented careers, curricula delivered in higher education establishment may focus on teaching material related to a single discipline. Certificate courses, for example, all certificate courses belong to a single discipline. Some of them diploma courses like music, in music like violin, guitar, veena, right? They belong to a single discipline. But by contrast, all undergraduate programs are multidisciplinary in nature. Multidisciplinary, transdisciplinary results in improved effective and cognitive learning and critical thinking, offering the learners the opportunity to obtain a broad general knowledge base. That is very important. Multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary education is very important in UG, PG, and doctoral programs. I am quoting from the dictionaries, Oxford dictionaries. According to oxforddictionaries.com, multidisciplinary is an adjective that describes combining or involving several academic disciplines or professional specializations in approach to a topic or problem. Interdisciplinary is an adjective that describes of relating to more than one branch of knowledge. Transdisciplinary is also an adjective that describes of relating to more than one branch of knowledge. Then what exactly is the difference between interdisciplinary and transdisciplinary? That difference is mentioned in the Lakehead University's Essential Guide to Writing Research Papers. According to this, multidisciplinary contracts disciplinary perspectives in an additive manner. 12 disciplines are there, additive manner. Each discipline adds to knowledge, additive manner.
meaning two or more disciplines each provide their viewpoint on problem from their own perspectives. Multidisciplinarity involves little interaction, no interaction across the disciplines. They keep their own identity, no interaction. Whereas interdisciplinarity combines two or more disciplines to a new level of integration, suggesting the component boundaries start to break down. Interdisciplinarity is no longer a simple addition of parts, but the recognition that each discipline can affect the research output of the other. Then what is transdisciplinarity? Transdisciplinarity occurs when two or more discipline perspectives transcend each other to form a new holistic approach. The outcome will be completely different from what one would expect from the addition of the parts. Transdisciplinarity results in a type xenogenesis, where the output is created as a result of disciplines integrating to become something completely new. Single discipline courses. Examples, I have given so many examples here. Certificate course in business skills, beekeeping, yoga, information technology, human rights, organic farming, all that. Even C++, Java, web designing, graphics designing, data science, data analytics with Python, art programming, clinical psychology. Many diploma courses, 2-year duration, are also of single discipline. Diploma in foreign languages like German, French, or Russian. Diploma in music, veena, violin, or guitar, single discipline. Multidisciplinary programs. All the undergraduate programs, academic programs are multidisciplinary in nature. However, the multidisciplinary programs also consist of interdisciplinary courses. Right? This is a very important point. The program is multidisciplinary, but it may consist of interdisciplinary courses. I have taught many interdisciplinary courses. For example, I taught corrosion science in 4th year BTech as open elective, in which all the branches of engineering registered for my course, all 8 branches of engineering. So this corrosion science course, right, is an interdisciplinary course between metallurgical engineering and electrochemistry. Unless I have knowledge of metallurgical and engineering and electrochemistry, I cannot teach corrosion science. It is an example of interdisciplinary course. But it is there in BTech as a part of the course in BTech metallurgical engineering also, corrosion science. Besides being open elective, it also has a core course in BTech metallurgical engineering and materials engineering. A few more examples I would like to mention here. Bachelor's program in law consists of courses such as environmental law, sociology of law, which are again interdisciplinary courses. Bachelor of Education, B.Ed, includes educational technology as an interdisciplinary course. Interdisciplinary academic programs, a few postgraduate programs, are interdisciplinary nature. The program itself is interdisciplinary. MTech or MSc in bioinformatics, it is an interdisciplinary program between biological sciences, life sciences, and information technology, bioinformatics. MS or dual degree program in computational linguistics, interdisciplinary academic program between computer science and linguistics. Computational natural sciences, interdisciplinary program between computer science, physics, and chemistry, offered at IIIT Hyderabad. MS in health psychology, interdisciplinary program between health sciences and psychology. MTech in environmental biotechnology,
interdisciplinary program between environmental engineering and biotechnology. Then transdisciplinary education. This needs a very high degree of collaboration between different departments and also teachers belonging to different disciplines. A very high degree of collaboration. Examples: projects executed by the students in the interdisciplinary academic program, executing research projects sponsored by the industry, executing consultancy projects. Multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary education programs are of great relevance in higher education. Multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary education nurtures the students to take up complex real-world problems and contribute to innovative solutions. I underline the word, contribute to innovative solutions. This approach has led to original methods, concepts, and solutions emerging. Many major discoveries have been made by interdisciplinary and transdisciplinary research by researchers from different disciplines. Dear friends, always try to find out all the related disciplines to your discipline. All the related disciplines. You will find so many disciplines related to your discipline of knowledge. You have a brainstorming in your department. You find out. Please do that exercise. Why do we need that exercise? So that when you revise the curriculum, you introduce, based on the needs of the students, the relevant interdisciplinary courses, advanced courses, based on the needs of the students, not just because we know. Always we revise the curriculum based on the needs of the students, based on the current and future trends. Right. For example, for chemistry, let me see, for chemistry. Chemistry is at the center, and it has an interface with so many science, technology, engineering, and mathematics and medicine subjects. For example, biosciences, then forensic sciences, earth and environment sciences, engineering, material science, then environmental science, physics, space science, agriculture, forestry and food science, archaeology, architecture and design, and biosciences. With so many disciplines of knowledge, chemistry has the interface. Right. Therefore, when we introduce the new courses, we always introduce interdisciplinary courses, supramolecular chemistry and nanochemistry, bioorganic chemistry, right? Like that, new sensors, electrochemical and biosensors is a course which is interdisciplinary between chemistry, physics, and electronics engineering. So, why do we introduce interdisciplinary courses? For the advantage of the students, and also to show to the students, to demonstrate to the students how different disciplines are interconnected. Knowledge is, as a whole, it is only one. For the sake of convenience, we have broken down knowledge into fragments, and each teacher teaches a particular course. But student at the end of the semester, at the end of the degree,
Students should be able to see the interconnections between different disciplines of knowledge. He should have interdisciplinarity, multidisciplinarity, transdisciplinarity in his contribution of knowledge, whether he goes to the industry, whether he goes to the research laboratory or some other fields. Role of faculty members. When you talk about interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary education, what should we do as faculty members? We should know, and only then we can implement it. Whatever I am talking needs implementation. Otherwise, it does not make any sense. First thing is design of curriculum. Faculty members have to follow the latest trends in the advancement of knowledge in their discipline and also frontier areas. Relevance of courses to the needs of the society and also students, and then revise the curriculum of any given academic program by including interdisciplinary courses as core or electives as applicable. For doing this, faculty members have to update their knowledge on a continuous basis to be competent enough to teach the newly introduced interdisciplinary courses. Then pedagogical practices. When we teach any course, we have to implement student-centric, learner-centric pedagogy, activities done by the students. Assignments in the class, outside the class, done by the students. Problem solving done by the students. Case study analysis done by the student. Group discussion done by the students. Student seminars. Organization of several seminars by the students. Teachers only as the guiding force. Right. Learner-centric, we have to make the students to see the interconnections between different concepts of a discipline and also see the interconnections between related disciplines of knowledge. For doing this, we need to have mastery of knowledge and deep insight, not only in our discipline, but also in the frontier areas. Then the students will be able to learn the art and science of learning and soon become holistic learners to see the knowledge as a whole. They will have critical thinking and problem-solving skills and try to solve any complex problem, real-world problem with greater confidence and ease. That is what is needed in higher education, sir, and not dumping a lot of information. Then research and consultancy, interdisciplinary research centers. Every university must establish interdisciplinary research centers, which include faculty members from different related disciplines. While the university provides basic research facilities, the research groups can equip further with advanced facilities through sponsored research projects from different funding agencies. Through interdisciplinary and transdisciplinary research, the research teams can work on advanced and frontier areas, resulting in original and new knowledge transcending the disciplines involved. This original knowledge must form a new field of knowledge and show a path and direction to other researchers in the world. India has to produce original knowledge, a new field of knowledge to show the path to the world. That is what is needed. Having a journey on the path laid by somebody else is very easy. But to create a new path, of knowledge needs interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary research. Therefore, the walls between the departments have to be broken, have to be deliberately removed only for the sake of convenience.
these labels exist, but in reality, the faculty from different departments must come close together, must interact with each other, cooperate with each other, and learn from each other, submit collaborative research projects. Research through collaboration increases the efficiency significantly. Arithmetic 1 plus 1 is equal to 2 fails there. When there is collaboration, there is synergism. 1 plus 1 is equal to 11. That kind of increase in efficiency and quality of research outcome happens when you have research in collaboration between different departments, faculty belonging to different departments. When I was Dean Research and Consultancy, I made a significant attempt to see that research groups, interdisciplinary research groups, interdepartmental research groups are established in the institute, and they submit sponsored research projects for funding from different agencies. Right? So one example I shall quote here, material science group. You have faculty members in that research group between physics, chemistry, electrical engineering, electronics and communication engineering, chemical engineering, biotechnology, mechanical engineering, civil engineering, all the departments. You have faculty. So they can interact with each other. We used to invite external experts to coordinate the interaction. And ultimately, it resulted in good research projects. We used to invite even DST also, which is the funding agents. Right. Mentoring young faculty members. The senior faculty must mentor the newly recruited faculty and other young faculty to enable them to reorient themselves in pursuing interdisciplinary or transdisciplinary teaching, research, and consultancy. While doing so, the young faculty members must be encouraged. If they have expertise in some new domain of knowledge, they must be encouraged to lead the teams, to lead the research teams. They must be the principal investigator. The head of the department may be co-principal investigator. This is important because they have greater expertise. There is no hierarchy in knowledge. There is no hierarchy in submitting the research projects. There is no hierarchy in contributing to new knowledge. Even students contribute to new knowledge through student innovation projects, which is one of the best practices we implemented at NIT Warangal. Student innovation projects, even first BTech, first year undergraduate, second year undergraduate, third year undergraduate, fourth year, anybody. We encouraged interdisciplinary, interdepartmental projects. We used to fund up to the maximum of 1 lakh rupees. Course categories, UG programs, as per UGC revised choice-based credit system, the multidisciplinary curriculum must consist of core courses, major disciplines, other related disciplines supporting, electives, discipline-specific, interdisciplinary and transdisciplinary, generic, then ability enhancement compulsory courses, including value education, environmental studies, skill enhancement courses, value-added courses, summer internship, research project in case of 4-year honors degree with research for 12 credits. Honor students not undertaking research will do 3 courses for a total of 12 credits as per UGC. But I am of the opinion, I advise all the colleges and universities to make research project as a compulsory in honors programs. In other 3-year degree programs, you make a project compulsory, a group project at least compulsory. Right? Only through projects they will be able to learn
what is multidisciplinary, interdisciplinary, all this, they will be able to connect and they will be able to achieve many graduate attributes. Innovative and flexible curriculum. A flexible curriculum is the curriculum that can adapt to the changing needs, interests, and the abilities of the students and learning environment. It is a student-centric curriculum based on the choice and needs of the students. While core courses and mandatory courses are continued, there is greater flexibility in the elective courses, which are offered as per the choice of the students. In other words, the elective courses offered may change every year depending upon the interest of the students in that batch. New elective courses are introduced in the curriculum based on the latest advances in the major disciplines and their relevance to the needs of the students. Interdisciplinary dual degree programs, BTech in computer science and MS in computational linguistics, BTech in computer science and MS in computational natural sciences, BTech in computer science and MS in bioinformatics. There are many more examples. Now, I am going to discuss another very, very important topic related to holistic education, that is intuitive learning. What is this intuitive learning? This is a very important takeaway from my lecture, intuitive learning. The word intuition comes from the Latin verb intuere, translated, and also from the English word intuit, to contemplate. Use of intuition sometimes referred to as responding to a gut feeling. I have a gut feeling that this is going to happen. Intuition is the ability to acquire knowledge without recourse to conscious reasoning or needing an explanation. Right? It is not rationalistic. It is my gut feeling. I don't know why. I cannot explain the reason. I cannot analyze this. It is beyond rationalistic approach. That is intuition. Now, why I'm going to bring this concept of intuition, you will understand before the end of this lecture. Intuition in philosophy is the power of obtaining knowledge that cannot be acquired either by inference or observation, by reason or by experience. I always try to quote Albert Einstein wherever relevant, because he's a great scientist, greatest scientist of 20th century. Right. So he says, please, I draw your kind attention to this great quotation. Very important quotation. The intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is the faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. We will not solve the real world problems from the same level of thinking with which we were at when we created them. More than anything else, this new century demands new thinking. We must change our materially based analysis of the world around us to include a more broader, more multidimensional perspectives. This is the quotation by Albert Einstein. The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is the faithful servant. Do you remember this
statement throughout your lives. Steve Jobs, co-founder of Apple company, he also had great respect for intuition. He believes in intuition. He says, I began to realize that an intuitive understanding and consciousness was more significant than abstract thinking and intellectual logical analysis. Look at this point. Intuitive understanding and consciousness was more significant than abstract thinking and intellectual logical analysis. Intuition is a very powerful thing, more powerful than intellect, in my opinion, that has had a big impact on my work. Then Alexis Carrel, Nobel Prize winner 1912 in physiology and medicine, he says, all great men and women are gifted with intuition. They know without reasoning or analysis what they need to know. Intuitive knowledge according to Sri Aurobindo. Sri Aurobindo defines intuition as reason without the influence of the senses. Intuition is a direct knowledge, a direct experience of something else. This knowledge can come from inside or from outside. Dr. Radhakrishnan said beautifully, I draw your kind attention to this expression from Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He said, intuition is a distinct form of experience. It is self-established, swatasiddha, self-evidencing, swasamvedya, self-luminous, swayam prakash. It is inexpressible. Intuition is inexpressible. Go further, sir. It escapes the limits of language and logic. There is no conception by which we can define it. The experience itself transcends expression. The experience, intuitive experience itself transcends expression. All creativity and indeed all progress in various spheres of life is the inevitable result of intuition. Role of intuition in scientific inventions. Discovery of buoyant force by Archimedes is a classical example of intuition. The story goes like this. Hero 2, king of Syracuse, asked Archimedes, Greek mathematician and physicist, whether the king's crown was really made of gold, pure gold, made by the craftsman. The king had the suspicion. He wanted to check whether the crown was really made of pure gold. While taking bath in a tub, Archimedes noted that as his body sank into the tub, the water overflowed. It instantaneously occurred to Archimedes how he could solve the problem of purity of golden crown, and he took to the street naked, shouting, Eureka, Eureka, means I have found it. I have found it. He has found it because of intuition. But he has to prove it, whether the crown, king's crown, was made of pure gold or not. For that, he has to do the experiment. This is the photograph of Archimedes, 287 BC to 212 BC. So what Archimedes did is, Archimedes took the mass of gold equivalent to the mass of the king's crown, and dipped into the holder of water.
he recorded the volume of water displaced. Then he took silver equivalent to the mass of king's crown and dipped into the same holder of water. He also recorded the volume of water displaced. He found that the volume of water displaced with silver is higher than that with the same mass of gold. This is because density of gold being higher than that of silver, it uses less mass of gold. Less mass of gold, therefore less volume of water displaced. Greater mass of silver, greater volume of water displaced. Then he actually dipped the king's crown into the same holder of water and recorded the volume of water displaced. He found that the volume of water displaced is between that of gold and silver of the same mass. By this experiment, Archimedes concluded that the king's crown was made of gold containing significant amount of silver. That means the craftsman cheated the king, and he has proved with the experiment before king. He then found the Archimedes principle, which was stated by him. Archimedes principle: a body immersed in a fluid experiences a buoyant force equal to the weight of the fluid it displaces. Then I shall give another example, sir, that is discovery of the structure of benzene molecule by Auguste Kekulé. Another example of intuition. Auguste Kekulé was one of the pioneers in organic chemistry. Kekulé was intrigued with the problem of finding the structure of a compound called benzene. The researchers knew that this molecule consists of 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. But the challenge was to find the way to group the atoms, the structure of the benzene. A common fact occurs with some people is that sometimes they can have a certain perception phenomenon by unconscious processes that occur in dreams, that happened exactly in the case of Kekulé. Kekulé's dream, they organized the what is called elaborately 25th anniversary of his first benzene paper, the German Chemical Society. In that meeting, Kekulé spoke of the creation of the theory, the structure of benzene, how he discovered the structure of benzene. Kekulé spoke in that meeting. What did he speak? He said that he had discovered the ring shape of the benzene molecule after having a reverie or daydream of snake seizing its own tail. He had a dream. In that dream, he found a snake seizing its own tail. So immediately, out of intuition, he related to that, to the structure of benzene molecule. So it must be of the ring shape, like that I shall show in the next slide. You can see here the outer one. Here you can see snake seizing its own tail. This he found in his dream. And the ring shape structure of the molecule was discovered by Kekulé. And it is this simple discovery and great discovery because of intuition by Kekulé was responsible for the development of the new drugs, molecules, new pharmaceuticals, the entire what is called allopathic medicine was revolutionized by this simple structure. Based on this, several new organic molecules could be synthesized. Then Carl Rogers, now I am trying to bring out
another perspective of holistic learning I am now trying to bring out. Carl Rogers, 1983, a great psychologist, emphasized that learning requires the experiential learning component. Rogers argued that in order to completely learn, an individual must engage in whole person learning. Whole person learning. Traditionally, learning has focused only on the cognitive domain, thinking, mental process, or left brain learning only. Rogers believed that in order to really learn, a person must use the right brain as well. Left brain, rationalistic, right brain, intuitive brain. Right? Both are necessary for the whole person learning, and that is holistic learning. In another perspective, in the words of Carl Rogers, significant learning combines the logical, the left brain activity, LBA, and the intuitive, right brain activity, RBA. The intellect, left brain activity, and the feelings, right brain activity. The concept, left brain activity, and the experience, right brain activity. The idea, left brain activity, and the meaning, right brain activity. So this is for the another perspective of holistic learning, whole brain learning, that means both left brain and right brain must be involved in learning. Intuition has a great role to play in learning, right? Therefore, in research and important decisions in business management and all other spheres of life, it is necessary that we use analytical reasoning and the intellect. That is important. You cannot ignore analytical reasoning and intellect, left brain activity. And also experience and intuition. That is right brain activity. Both must be used in research, interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. Intuitive learning, context of higher education. Individual or group projects. It is the best practice that most of the courses include mini projects in the teaching learning process, besides the major project in the final year. The projects may be open-minded, and the project may be chosen by the students from a list of projects suggested by the teacher. Interdisciplinary projects with students from different disciplines of knowledge are also desirable. The teacher may guide the student, but not direct the student. The execution of projects in such a way might include the functions of both the left brain and the right brain, holistic learning. Group projects by the students, jigsaw project method. Whenever you conduct group projects by the students, you always use jigsaw project method, which is very, very important. For example, there may be 3 students in a group. The teacher has to design the group projects in such a way that the project has 3 different tasks. Each student in the group chooses one task after discussion among the group. Each student performs his or her task. There may be discussion among the group and peer learning is encouraged. After all the 3 students complete their task, the outcomes of each task are integrated to result in the outcome of the project. In this method, every student is active learner and accountable for the execution of his or her task. Otherwise, in the traditional method, one is active learner and the other 2 are passive observers or sleeping partners. Open-ended experiments in the laboratory. There is a large scope for intuitive learning in the execution of open-ended experiments. Open-ended assignments, question-answer sessions also nurture intuitive learning. Intuitive learning and learning based on analytical reasoning can go together. However, intuitive learning needs a greater degree of contemplation. In this process, teachers also become intuitive learners.
which is very important in their day-to-day decisions also, not only in scientific research, not only in sociological research, not only in teaching learning process. In our day-to-day lives also, intuition has a great role to play, provided we involve ourselves in contemplation, in deep thinking for several days about any problem, right? So always don't use only the rationalistic and analytical brain, and you also give the right brain, which shall execute based on intuition and also experience. Experience and intuition are as important as your rationalistic thinking, analytical thinking. Though traditionally inductive and deductive methods, analytical reasoning and critical thinking play a vital role in postgraduate and doctoral thesis, students may be guided in using their intuition also. There is a large scope for intuitive learning at all levels of higher education. Through holistic learning only, now I am combining the whole thing in a sense. Through holistic learning only, using the left brain and right brain, that is holistic learning, another perspective. I told you I shall bring at the end another perspective. The students and teachers will be more creative and contribute to original knowledge in their respective fields and also in frontier areas. Implementation of holistic and multidisciplinary education, challenges and issues. Recruitment of the qualified and competent faculty who are well trained and who believe in holistic and multidisciplinary education. If we look at this point, it's a very big challenge. We do not have required number of qualified and competent faculty in most of the 90% of the colleges and universities in India, including NITs, IITs, central universities. Many posts are vacant. The situation is worse in universities and colleges under the purview of state government, still worse. The contractual faculty are appointed on meager salaries. How can you get the best faculty? Sarvepalli Radhakrishnan said the best minds in the society must be attracted to the best teaching profession. How do you attract the best minds to the teaching profession? Only when you make them comfortable in their living. You make them comfortable with their families. Angela Merkel, the former Chancellor of Germany, had put the teaching profession at the highest esteem in the country, providing the best package, salary package, and other benefits to the teachers of the country. That should happen in India also. Qualified and competent required number, adequate number at the teacher-student ratio of at least 1:15 or better. 1:15 or better, teacher-student ratio. Design and implementation of innovative and flexible curriculum. Again, this is a challenge for want of faculty. Implementation of the student-faculty ratio, 15:1 or better in all the colleges and universities. Providing the necessary infrastructural facilities. Providing a congenial learning environment. Providing inclusive education in colleges and universities. Societal values. Societal values are exactly opposite to the human values, right? The negative influence of social media, negative impact of social media against human values. Impact of entertainment industry as a negative factor in learning among students. Entertainment industry has taken over. Learning has taken a backseat. Entry of super AI, artificial intelligence tools into learning. It is dangerous, right? I am of the opinion it is dangerous, because then where is the role of human mind?
What is the role of teacher? The dignity of teacher must be preserved, must be protected. The artificial intelligence tools can play role in the as tools. They should not overplay. This is very important, sir. Everybody talks about artificial intelligence tools and the greatness, but there is a negative side of that, which was cautioned by Stephen Hawking, a great physicist. He cautioned against overuse of AI in every field. Just like that. Human dignity, human capabilities of human mind are unlimited. They must be encouraged. Right? Human being cannot be a mechanical person. Teaching and learning should not be a mechanical process. It should be a creative process. Right kind of parent-child relationship, teacher-student relationship also are very, very important in providing holistic and multidisciplinary education. Conclusion. The challenges and issues in implementation of holistic and multidisciplinary education can be overcome with the collective effort from the governments, vice chancellors, principals of the universities and colleges, and above all the teachers in higher education. Holistic education might lead to holistic individuals who can live in harmony with all existence that leads to the peace in the world. Sri APJ Abdul Kalam, ex-President of India, in his speech in the Golden Jubilee meeting of the European Union, quoted the Tamil philosopher Kaniyan Pongunrar, who said, "When there is righteousness in the character, there is beauty in the heart. When there is beauty in the heart, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world." This is the video link. You can go through the video link. It's only a 2-minute speech, considered to be one of the best speeches so far. Now, these are all the recommended videos. Channel name Professor B.V. Apparao. There are 80 videos related to pedagogy and higher education and all that. This is the link, channel link, right? 80 videos. The most important ways to improve teaching, your teaching. Please watch that video, artificial intelligence and in education, knowledge skill. These are examples. Now, question answers. Any questions, sir? Any reflections? Any questions? Please unmute yourself and you can ask. I shall be extremely happy if you share your reflections, your questions, your queries. It is a kind of exchange of ideas. You have your own experiences. You have your own strengths. Let us discuss. Please ask me your questions. Unmute yourself and ask questions. Hello, sir. हो सर चालेल. Yes, sir. Participants, if there are no questions, then we can conclude. Questions are very, very important in any session. Yes, anyone has any queries or the questions? Sir, I think we should conclude. There are no questions, sir. Okay. 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 So on behalf of Malviya Mission Teacher Training Center, Sant Garge Baba, Amravati University,
I extend my sincere thanks to Professor Apparao sir for such a wonderful and insightful session towards this holistic and multidisciplinary education, very important component of this national education policy. We are really thankful to you, sir. Whatever maybe your inputs you have given here, we will definitely try to inculcate in our subjects, in our teaching learning. And with the kind consent of Professor Apparao sir, I would like to declare that this Thank you session will very be over here. Thank you, sir. Thank Thank you. you so much. And participants, we will continue for the next session. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Hello, Professor Bedre, sir. Good afternoon. Yes, good afternoon. Shall we start, sir, if you could permit? Yes, please. So, good afternoon, friends. Once again, as I have already told you that that today's session have been split into the two different parts. So, moving towards the another part of today's session, I would like to request all the participants please open their videos first, because this session is going to very interactive and without presence of the participants, because if we can't see the participants, it would not be possible to deliver the lecture by the speaker. So it will be the request from my side and speaker sides also, you can please open your videos. So friends, as I have earlier told you that the student diversity and the inclusive education, that is the inclusive education, is the foremost component and very important aspect of this national education policy, that policymakers had set down the agenda that we have to achieve 100% gross enrollment ratio in the schooling education by 2030 and 50% in the higher education by 2035. So, sir, what are the challenges and how should the education must be inclusive? We will discuss on these very much important aspects with the help of one renowned and scholarly expert, Professor R.T. Bedre, sir. So, sir, first of all, I extend my warm welcome to you to this flagship program and particular to this session. Friends, Professor Bedre, sir, is at present serving as a professor and the director of this Malviya Mission Teacher Training Center at Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalay. It is a central university situated in the Sagar, Madhya Pradesh. Before joining this institution, sir, sir was the principal at Gangakher at our Maharashtra, in our Maharashtra. Sir has having a more than 3 decades of experience in this field of higher education. Particularly, he is belonging to Faculty of Humanities with the subject of English. But rather than sir has a vast experience in this field of academic administration of particular higher education. Being the director of this Malviya Mission Teacher Training Center, sir has the similar responsibility on his shoulder to sensitize and train the faculty members towards adoption and the implementation of this national education policy. He was the author of a couple of books, and there are more than 50 articles on his credit that has been published in the reputed national as well as the international journal. So, friends, this is the brief introduction with regards to Professor Bedre, sir. Yes, definitely. We will going in the Hindi as well as Marathi, as participant will expect. And Professor Bedre, sir, has fluent command on the all three languages. So don't worry about that. But before starting the session, I have again request you, if you want, if you want to very interactive session, you can open your cameras, because without that it is not possible to interact with all the participants. So I once again extend my warm welcome to Professor Bedre, sir. And sir, may I request you to please start with your session, sir, please. Thank you. Thank you very much, sir. Because you made my job easy. As you were saying that without having cameras on, it is not possible to have a nice interaction. But let me put it directly. If no camera is on, I will stop there only. मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आपसे, अगर मुझे किसी का कैमरा नहीं दिखाई देता है ऑन, तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि बिना किसी को सामने रखते बात करना मेरे लिए असंभव। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी है कि देशमुख साहब, ठाकरे जी, उबाळे जी, वेलकड़कर साहब, सपकाळ जी, मैडम बोगे जी, मानकर जी, मोनाली मैडम and Ashish Rao and of course Lande ma'am are visible here. Thank you very much for being. ये लग रहा है मेरी क्या के तौर पर। अलाम।
because speaking for Kedar sir, मागच्या आठवड्यामध्ये एक घटना घडलेली आहे. लास्ट वीक बीजेपी को एक प्रवक्ता बिना पैंट पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. तो प्लीज टेक केयर, इवन दो वी आर एट होम और मे बी एट सम वर्क प्लेस, वेयर टू बी इन द प्रॉपर ड्रेसिंग इटसेल्फ. थोड़ी सी इस बात की तरफ ध्यान रहे. ये लोअर पहनना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है. एनीवे, थैंक यू. तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर आतिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और बाकी टॉप मेंबर्स ऑफ दिस सेंटर फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू शेयर some of my views on diversity of students and their inclusion in higher education. लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि 4-5 1-2 मिनट में इस कोर्स के बारे में कहूंगा. Dear friends, as we know that as on today there may be more than 120 such centers. 120 से ज्यादा सेंटर ऐसे एनईपी कोर्सेस महीने में 2-2 करवा रहे हैं. And having at least 100 participants in each course. मतलब एक सेंटर एक साल में लगभग 24 कोर्सेस करवा के 2400 स्टूडेंट को या टीचर को ट्रेन करवा रहा है. और ऐसे हमारे देश में 120 सेंटर्स हैं. एंड दिस सेंटर्स आर डूइंग दिस जॉब ओनली. बीच बीच में कभी हम रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्स करवाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारे एनर्जी इसी में जा रहे हैं. देन द क्वेश्चन बिकम्स व्हाई. सवाल आता है कि क्यों करवा रहे थे, क्या कारण. ऐसा तो नहीं कि सरकार के पास बहुत पैसा है, हम लोग खाली बैठे थे इसलिए कोर्सेस करवा रहे हैं, ऐसी बात. तो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ. हो जाएगा. थैंक यू. अलार्म लगाया तो वो बज रहा है. चलो, थैंक यू. तो क्यों करवा रहे हैं कोर्स और फोकसिंग ऑन एनईपी ओनली. We know that this policy was approved by our cabinet of the central government in the month of July 2020. इसलिए हम उसको NEP 2020 कहते हैं, NEP 2020 कहते हैं. और उस साल से ये पॉलिसी became open for implementation for all universities, for all states. So what happened? Some states started implementing it in the year 21-22. Some started in 22-23. Some started in 23-24. States like Maharashtra started in 24-25. And some states are even today trying. They have not started implementing it. अभी भी उन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं किया. So after passing 3 years या 2-2.5 साल जाने के बाद हमारे मिनिस्ट्री के मतलब ऑब्जर्वेशन में ये आया कि जब तक हमारे देश के 16 लाख टीचर्स को हम ओरिएंट नहीं करते हैं, तो देखो एनईपी में सबसे बड़ा रोल हमारा है. बनाने वाले ने पॉलिसी बनाई, वाइस चांसलर रेगुलेशन निकालने के, लेकिन उसको ग्राउंड पे एडमिशन से लेकर उसकी मार्कशीट बनाने तक काम हमें करना है. उसका टाइम टेबल बनाना, हम में से कुछ लोग अगर बीओएस में तो वहाँ करिकुलम बनाना उसका, फिर उसको अकॉर्डिंगली उसके क्वेश्चन पेपर बनाना, उसको क्रेडिट में डिवाइड करना, उसका एबीसी अकाउंट बच्चों का खोलना, ये सारी चीजें हमें ही करनी. मतलब we are the most responsible
स्टेक होल्डर ऑफ ऑल। इसलिए मिनिस्ट्री को समझ में आया कि जब तक हम टीचर लोगों को सेंसिटाइज नहीं करते तब तक इस पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट करना नामुमकिन है। अगर मैं उसी पिक्चर की डायलॉग मारूं, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नहीं, क्या डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है, इज इन द सेम, इट इज इम्पॉसिबल। Therefore, Minister of Education decided the mission of orienting the teachers in the span of 3 years. 23 से लेकर 3 साल में देश के सारे 16 लाख टीचर्स को एनईपी को लेकर ओरिएंट करने का काम मिशन मोड में दिया है। फिर डिसीजन तो हुआ। अब ओरिएंट करना है मतलब करना क्या है? अब हम सब लोग देहात के हैं, आपल्या गावात सप्ताह चालतो, रामकथा चालती, भागवत चालतं, है ना, मेनी मोर थिंग्स आर देयर. इट मीन some topic is taken there and they are just going and going and going and going on. It is not going to help us here. यहाँ ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करना था, तो फिर यूजीसी ने क्या किया, उसके कंप्लीट गाइडलाइन निकाला, एक प्रॉपर एसओपी दी उसके। क्या डिसाइड हुआ कि वी विल आइडेंटिफाई सम 8 मेजर थीम्स ऑफ एनईपी 202। 8 मेजर थीम्स। वो कौन से थे फिर? होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूज ऑफ आईसीटी, स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन एंड सोसाइटी, देन governance, management and academic leadership, and the last one was that is diversity of students and inclusive education. ऐसे इसमें 8 थीम, और डिसाइड ये हुआ इसमें से हर एक थीम पे हम 2-2 सेशन करवाएंगे ऑनलाइन मोड। मतलब 8 थीम पे 2-2 सेशन, 16 सेशन आपके होने जा रहे हैं। पहले इस कोर्सेज को रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने कि सबसे पहला काम किया, इसकी फीस माफ कर देते। आपको पर हम में से बहुत सारे लोग यहाँ सीनियर लोग हैं, हम जब भी कोई कोर्स करते थे तो हमें 1000 रुपीज फीस वी हैड टू पे, हमें 1000 रुपये भरने पड़ते थे। लेकिन शायद गवर्नमेंट ने सोचा कि हमने सारे लोगों को लाभार्थी बना दिया है, लाडली बहना लाडला के साथ, तो लाडला टीचर क्यों नहीं, फिर हमें भी वो माफ कर। फिर क्या हुआ, फिर भी लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बिकॉज मेनी पीपल हैड वी डोंट नीड इट। फिर ये हुआ कि इस 10 दिन चलने वाले कोर्स को 1 वीक शॉर्ट टर्म कोर्स के हिसाब से रखा गया। अगर जो भी कोई कोर्स करता है उस कोर्स को 1 हफ्ता चलने वाले शॉर्ट टर्म कोर्स के बराबर माना गया। That can be used anywhere for your CAS, for your promotion, or anywhere you can use it in your API. Okay. जब वो किया गया तब बात आ गई कि अब ग्रेड डालने पड़ेगी इस पे, A+, A, B, C। फिर ऐसे रैंडमली तो ग्रेड किसी को नहीं दे सकते। पहले साल कोई ग्रेड नहीं थे, दूसरे साल से शुरू। फिर उसके लिए डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे कि 2 40-40 मार्क के एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। आपको इस कोर्स में 2 टेस्ट करवाने हैं, 80 मार्क्स देयर एंड 20 मार्क्स वेर देयर फॉर ओवरऑल रेस्पॉन्स। आप जैसे कि आप डेली अटेंडेंस मार्क करते हो क्या, आप डेली समरी लिखते हो क्या, आप अपना कैमरा ऑन करते हो कि बंद करते हो, बस सारी चीजें इसमें आ गई 20 मार्क्स। एंड देन ग्रेड देयर गिवन। वन मोर थिंग अबाउट देन, ये कोर्स ऑनलाइन में होने तो फ्लेक्सिबिलिटी रखो। जरूर नहीं कि सारे को 2:30 बजे शुरू होने चाहिए, कोई बात नहीं। अगर पार्टिसिपेंट चाहते हैं कि चलो उसको 4 के बाद शुरू करते हैं, 4 के बाद शुरू करते हैं। हम जिसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट सेंट्रिक कोर्स को बनाया गया आपके हिसाब से। 2 बजे तो कॉलेज में काम होता है, हम नहीं कर पाते 2 बजे, तो चलो 2:30 बजे से रखते हैं, 3 बजे से रखते हैं, कहीं कहीं तो 6 मतलब 5 बजे से 7-8 बजे तक चल रहे हैं कोर्स। दिस मच फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन हियर।
और अब इस कोर्स इस स्कीम का ये लगभग दूसरा साल है या तीसरा साल हम कहेंगे। ऑफ कोर्स सितंबर में शुरू किया था। So this is the SOP of this program. And उसी के तहत I am here to have some discussion on the topic that is student diversity and inclusive education. अब इसमें दो चीजें हैं। एक है diversity of students and second thing is inclusive education. Both words or both phrases are quite clear. Diversity of students means what? What is the variety of students? कैसे हमारे पास आने वाले बच्चे अलग अलग स्टाटा से आते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सोशली अपर क्लास से है, कोई सोशली लोअर क्लास से है, ऐसे नहीं मानते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ दैट ऑल्सो हम किसी को ऐसा नहीं मान सकते ये कोई लोअर कोई अपर है, बट देयर आर सम कैटेगरीज एज लेड डाउन बाय गवर्नमेंट। कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई एनटी है, कोई माइनॉरिटी है। ये भी हो सकता है some people are from rural background, some are from urban, some are from offside. ये भी हो सकता है कि some students are there who are the first generation learners. इससे पहले उनके घर में किसी ने भी हायर एजुकेशन का नाम तक नहीं सुना। And there may be students whose second or third or fourth generation is in service. तो ऐसी वैरायटी हमारे पास है। Some are fast learners, some are slow learners. Both things are there. Not all the students are same. Please remember. हमारे सामने ये डाइवर्स स्टूडेंट ग्रुप है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो स्कूल लेवल तक तो ठीक है, हम देखते हैं आश्रमशाळा आहेत, अनुसूचित जातीसाठीच्या निवासी शाळा आहेत, ओबीसीच्या शाळा आहेत, अपंगासाठीच्या आहेत, जनरलसाठीच्या आहेत, मुलींच्या आहेत, but that is not possible in higher education. In higher education, you cannot keep separate colleges for SCs, separate colleges for STs, separate colleges for minorities. No. आपका एक क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ कॉलेजेस आर माइनॉरिटी कॉलेजेस ना, those colleges are not minority colleges. The management which is running is that is recognized as minority. कॉलेज माइनॉरिटी में होता है। तो ये सारे ग्रुप्स को हमें एक ही प्रकार का एजुकेशन देना है, एक ही साथ पढ़ाना है। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। नाउ इन द प्रेजेंट टॉक I'll present my matter in 3 points before you. एक, आज के हमारे हायर एजुकेशन में कितनी डाइवर्सिटी को हम इंक्लूड कर पाए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज ऑफ नाउ व्हाट आर द फिगर्स, हालात आज के क्या है। सेकंड थिंग, व्हाट मेजर्स NEP 2.0 टॉक टू टेक, क्या क्या कदम उठाना चाहती है NEP। And in the third part, I will be summing up what are the issues, what are the problems, what are the challenges in bringing this diversity in education. So these 3 topics I will share with you. Let me share my screen. एक मिनट, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, थैंक यू। Yes, sir. सबसे पहले तो जो सवाल बनता है कि भाई व्हाई डू वी वांट टू गिव एक्सेस टू हायर एजुकेशन टू ऑल, क्यों सबको पढ़ाना जरूरी है? बिना पढ़े भी तो काम हो सकता है ना। जब मैं शेयर मोड में जाता हूं ना, तो सिर्फ मैं 1 या 2 लोगों को देख पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। चलो, डॉक्टर रामित बिहोर, why education? Why should not we be happy with the school education?
See, there is a big difference between the school education and higher education. School education tries to imbibe some kind of literacy in the learners, not beyond that. I repeat, school education develops some kind of literacy, maybe lower level or higher level among the students. It does not make you ready for any job, any kind of employment. No. आज कोई भी जॉब ऐसा नहीं रहा मैडम ठाकरे मैडम जिसको 12वीं के बाद जिसको जॉब मिलना है नहीं because class 3 posts are not there now, class 4 posts are not there now, and for any class 3 post clerical post you need to have degree graduation with you. Any post. That is one thing. Second thing, as we know that our constitution has given you some rights. It has set some visions. And to bring those visions, to bring those ideas into reality, we need support of others. And third thing that is important to me is that कि आप राम सर आपने कई बार सुना होगा ठाकरे साहब कि हम कहते हैं कि हमारे देश में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी है. We have the largest youth in India. कल आप ये वर्ड पिछले महीने से बार बार सुनने में आता है जैन जी है ना. नेपाल में वो रिवोल्ट होने के बाद एक वर्ड को हम बार बार सुन रहे हैं जैन जी. And know what is the Jain Ji? The youth falling between the age group 13 to 28. That is called Jain Ji. And yesterday I was listening to some debate. कहा गया कि there are 38 crore youth or population in our India that falls in the age group of Jain Ji. 38 crore. हमारे देश की 38 करोड़ आबादी इस जैन जी के दायरे में आती है. लेकिन जब हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे पास है, इट मीन 18 to 40. 18 से लेकर 40 तक की हमारे देश में 40% आबादी है. दैट इज द लार्जेस्ट. अब कहा जाए तो ये एसेट भी है और कहा जाए तो ये लायबिलिटी भी है. ये गर्व की भी बात और ये शर्म की भी बात हो सकती है. क्यों हो सकती है? अगर if we could provide some employment, some work to these hands of the youth, they may bring wonder. They may do wonder. वो कमाल कर सकते हैं, जादू कर सकते हो अगर इन सारे लोगों को काम मिलता है. Because we have that much in population with us. लेकिन अगर वही बच्चे बिना काम के घर बैठे सिर्फ खाना खाते हैं तो दैट इज liability for us. That is बोझ. That is liability for us. तो इसको बोझ रखना है कि एसेट करना है? इसको एसेट के रूप में कन्वर्ट करना है या इसको लायबिलिटी रहने देना है? दैट इज डिटरमिन्ड बाय दिस हायर एजुकेशन. इसलिए सबसे ज्यादा लोड हायर एजुकेशन. एंड थर्ड थिंग लेट मी टेल यू, ये हमारे सारे युवा लोग किसी एक ही कम्युनिटी के नहीं है, किसी एक ही प्रदेश के नहीं है, किसी एक ही जाति से नहीं है, किसी एक ही रिलीजन से नहीं है, किसी एक ही क्लास के नहीं है. वो अलग 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 क्लासेस में स्प्रेड हो गए, अलग अलग क्लासेस में वो बिखरे हुए हैं. और उन सारे लोगों को कहा जाता है SEDG, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जो किसी व्यवस्था के चलते, किसी कारण के चलते अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाया, अपने आप को एम्पावर नहीं कर पाया, उनको एम्पावर होने का मौका नहीं मिला. ऐसे सारे लोगों को हम SEDG कहते हैं. दैट इज सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप. एंड रिमेंबर, मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन लाइज देयर. दिस इज वन थिंग. नाउ लेट मी गो ऑनवर्ड. नाउ सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस of the diversity of the students. देखो आपके सामने एक स्लाइड होगी
Madam Nilima ji, this figure I have taken from the Government of India's website or Government of India's report. Sorry. Ministry of Education, Government of India, every year publishes a report for school education and for higher education. The report for higher education is called AISHE report, All India Survey of Higher Education. Every year, this survey is made. Survey is undertaken, AISHE. And the latest report with us is for the year 2021-22. देशमुख साहब उसके बाद 3 साल निकल गए लेकिन कोई सर्वे आया नहीं। 21-22 का हमारे पास लेटेस्ट, उसके बाद 22-23 निकल गया, 23-24 निकल गया और 24-25 भी निकल गया। पिछले 3 साल से हमारे पास गवर्नमेंट ने कोई डेटा हमें नहीं दिया है। एनीवे, so these are the reports or these are the things from the report for the year 2021-22. 21-22. And in that year, in India, there were 1,168 university and university-like institutes. How many were there? 1,168 university and university-like institutes. 1,168. And there were almost 71 lakh students enrolled there. 1168 मध्ये हे जवळपास 71 were there. Now let me tell you this is 96 here. 96,38,345. Out of total enrollment, 22% enrollment was there in all universities taken together. Then we had 473 private universities also. जब मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक वर्धा, सागर, BHU, JNU, Delhi University, these are the central universities. When I say state universities, Amravati, Nagpur, Pune, Mumbai, these are the state universities. And there are 473 purely private universities also. जहाँ सब कुछ प्राइवेट है. मेरे ख्याल से आपके अमरावती के आसपास दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट, दत्ता मेघे यूनिवर्सिटी मिल गई थे, और इन मराठवाड़ा MGM यूनिवर्सिटी थे, और इन वेस्टर्न महाराष्ट्र देन आई थिंक सिम्बोसिस, संदीप यूनिवर्सिटी, DY Patil यूनिवर्सिटी, many more are there, and they are 473 in number. And see, here is the list. Then we have 45,473 colleges. आज हो सकता है कि 50,000 के आसपास गए हो, but in that year the colleges were 45,000 plus, and among them also 9,193 were purely government colleges. आपके अमरावती में हो सकता है, आपके नागपुर में हो सकता है. There are some government colleges. ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय औरंगाबाद, विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, आई थिंक अमरावती और नागपुर. Such purely government colleges are 9,193, and there were 5,695 semi-government colleges. Semi-government in the sense the management is private, but the salary grant is given by the state government. Such number is also 5,695, and let me tell you, more than, or I should say, almost 28,000 colleges are there which are purely unaided, where government pays nothing for the development of infrastructure or salary. Nothing. ऐसे कॉलेज 27,000 है. 27,937 मतलब लगभग 28,000. सारे प्रोफेशनल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज 2000 के बाद निकले. आपके महाराष्ट्र में
2001 जो भी निकले कॉलेज है ना, ये सारे परमानेंट नॉन ग्रेजुएट कॉलेज, ये सारा लगभग है 28। देन वी हैव 12,002 SAI, stand alone institutions. Yes, AI. They are 12,000. What are these SAIs? SAIs mean those institutes which offer higher education, but they are not part of any university. They are not affiliated to any university. जैसे कि आपके सारे डीएड कॉलेजेस, डीएड कॉलेजेस are part of higher education, but they are not affiliated to any university. In the same way, polytechnical colleges, they are part of higher education, but they are not affiliated to a university. And finally, some nursing, hotel management, such things are there. And see, here are the enrollment there. सारे यूनिवर्सिटीज में मिला के 96,000, कॉलेजेस में मिला के 3,04,00,000 और ये एसएआई में मिला के 21,70,044। अब यहाँ देख लेना सिर्फ, यू कैन सी हियर मैक्सिमम नंबर इज हियर। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे कहाँ है? कॉलेज में। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं, इस साल हमारे भारत में 4,33,00,000 स्टूडेंट थे, 4,33,00,000, and you can imagine out of those 3,04,00,000 were in the colleges only. मतलब 70% students are in the colleges, 22% are in the universities, and 6% 34 point are in the SAI. So this is our higher education setup. मैं थोड़ा इसको आगे लेता हूँ। अब यहाँ देखिए, I told you so far what kind of higher education setup we have. हमारे पास सेटअप क्या है। अब बात करेंगे कि how many students have found access in higher education and how they come from different diverse groups. देख लेना, जैसे कि मैंने आपको कहा था, the total figure in the year 2021-22 is 4,33,00,000. Total figure. हो सकता है more or less, but roughly 4,33,00,000. Among them also, ये भी देख लेना, the GER is 28.4. मेरे ख्याल से अब तक तो आपको जीआर के बारे में पता चला, व्हाट इज जीआर आपको पता चला ही होगा। हमारे ठाकरे साहब, नरेंद्र कुमार जी, बाय नाउ यू हैव कम टू नो व्हाट जीईआर इज देयर, हाउ इट इज ड्रॉन। किसी को पता है यार? विल समबडी टेल मी व्हाट जीईआर इज? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एंड सर, डू यू नो हाउ इट इज ड्रॉन? Sir, actually, हाउ दिस परसेंटेज इज देयर? I think lack of awareness is responsible for Of course, this of course. less enrollment. That you are very right. That I will discuss later on. But how we came to know that here the GRE 28.4? What is the formula, or what is the, I can say, what things are there? हाँ मैडम, हॅलो, हाँ येतो बोला. नाही जॉईन होतील ते, मला फोन आला होता त्यांचा, झाल्यास ते जॉईन करून बघा बरं. त्यांना आवाज द्या ना, आवाज द्या. त्यांचं प्रेझेंटेशन तुम्हाला पाठवले मी. त्यांचा नंबर एक मिनिट, माझा एक कोर्स चालू आहे. सर जॉईन झाले का? हा जॉईन सुरू करा, मला फोन आला होता. ये ओके, सॉरी.
because one more course is taking place at my center also. So you are very right that lack of awareness is one of the major reasons for having not access to higher education. That's true. But my question was, I said that in the year 2021-22, 4 crore 33 lakh students were enrolled and the GER of our higher education was 28.4. So how we came to know or how we arrived that it is 28.4? इसका आंसर सिंपल है, मैं बता फॉर्मूला सिंपल है सिर्फ 18 to 23 के एज ग्रुप में हमारा जितना भी पॉपुलेशन आता है 18 to 23, 18 से लेकर 23 तक के एज ग्रुप में हमारा जितना भी पॉपुलेशन होता है उसमें से जितने बच्चे या लड़के लड़कियां हायर एजुकेशन में आ पाते हैं दैट इज द जीआर ऑफ हायर एजुकेशन दैट ईयर. मान लीजिए कि इन दैट ईयर देयर वेर 100 boys and girls falling in the age group 18 to 23. And in that year, only 28.4 students were able to find admission in higher education. That is the GER of higher education. अब सर यहां देख लेना, अगर 28.4% का 4 करोड़ 33 लाख होता है तो you can imagine what could be the 100%. You can just, if you are good in mathematics, अगर आपको नंबर से खेलना आता है तो you can just imagine. अगर 28.4 4 करोड़ 33 लाख है तो उसका 100% कितना हो सकता है? नियर अबाउट 3 times more, है ना? लगभग 3 गुना ज्यादा इसका. मतलब 13 करोड़ के आसपास हमारे देश में आबादी 18 के 23 के ग्रुप में लगभग 13 करोड़. आई एम जस्ट मेकिंग इट राउंड. 13 करोड़ बच्चे, 13 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ 33 लाख यहाँ आ चुके हैं, शिक्षा में आ चुके हैं. मतलब सर उसका दूसरा ये है कि 71.6% स्टूडेंट्स और 21.6% population of our eligible population is outside higher education. मराठी में शब्द आहे ना, शाळा बाह्य मुले. इन द सेम वे आपल्या देशातले 71.6% पॉप्युलेशन ही त्या एज ग्रुप मधली हायर एज्युकेशन मध्ये येऊ शकते. That is reality. Now when we break it up, see 2.26, 2 crore 26 lakhs were boys and 2 crore 07 lakh are female. यहाँ भी गैप कितना है? 19 लाख के गैप. 19 lakh women are less than men. Now let me come to the social groups. इसको कैटेगरीज कह रहे थे because as I told you in the very beginning that the SCDGs are scattered over in different groups. SCs में है, STs में है, OBCs में है, minorities में है, different groups में है. Now let me tell you here how many students belonging to SC were enrolled in that year. Sir, the number is 66.23 lakhs. और उसका GR कितना था? 25.9. उसमें विमेन कितने थे? 31 लाख. कल का GR कितना था? 26%. See here. Their enrollment is 15%. अब बात करते हैं STs की. There were only 27.1 lakh ST students in higher education. Only 27.1 lakh. आप जानते हैं कि विदर्भा में ऐसे बहुत सारे पॉकेट से जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है. छत्तीसगढ़ इज a tribal state. Jharkhand is a tribal state. In Madhya Pradesh also some area is known as tribal state. In Maharashtra also in Konkan, Thane, that part is also called tribal state. Tribal part. It means we have very prominent pockets of tribal population in India, but even then,
the number of ST or number of students belonging to ST is 27 lakh only, and their GR is 21.4. म्हणजे पाहिलं here almost 74% students belonging to SC are unable to find access in higher education. कई कारणों से वो उच्च शिक्षा में नहीं आ पाए या नहीं आ पाते. 74% are outside. Here see लगभग 79.8 youth belonging to ST category are unable to find access in higher education. हम उनको इंक्लूड नहीं कर पाए उच्च शिक्षा में. Then let me come to OBC. The number is very high. 1,63 lakh. And their proportion is 37.8% in the total 4,33. इनका है 15%, इनका है 6.3, इनका है 37.8, and others are 40%. Now, sorry. Here I could give you the number of enrolled students, that is 1,63 lakh, but dear sir, I am not able to give here GR of OBC. ठाकरे सर इसका कोई कारण बता सकते हैं आप? I could give you GR of SCs. I could give you GR of STs, but I am not able to give you the GR of OBCs. What could be the possible reason? Can you tell me, sir? What could be the reason? The reason is so simple, sir. हमारे देश में अभी भी कास्ट वाइज सेंसस नहीं होता. प्लीज रिमेम्बर, हमने क्या किया है, कुछ ट्राइब्स को पकड़ के एसटी में डाला, कुछ कम्युनिटीज को पकड़ के एससी में डाला है. सिमिलरली हम क्या करते हैं, those caste, those communities which are found socially, economically backward, we place them in the OBC group. जैसे कि मैंने कहा, हमारे देश में कास्ट वाइज सेंसस नहीं होता है, इसलिए यहाँ कोई नहीं कह सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कह सकती कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन ओबीसी में. एससी का कहेंगे, एसटी का कहेंगे, but they can't tell you, government cannot tell you that in India this much population is OBC population because there is no census, caste like census. गवर्नमेंट नहीं बता सकता कि हमारे देश में कितने ओबीसी है. जब गवर्नमेंट ये नहीं बता सकता कि हमारे देश में कितने ओबीसी है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि इतने में से इतने लोग उच्च शिक्षा में आए. The same is true about other group also. What are the groups? Minority groups, PWDs and EWS. When I say minority groups, all religious minorities. Muslim, Sikhs, Jain, Parsis, Christian, Buddhist. That census is also not with us. हमारे पास ये भी सेंसस नहीं कि हमारे पास PWDs कितने. No census. Persons with disability, दिव्यांगजन. No government record. Therefore, we are not able to give you here GER. कितने में से ये इतने हैं ये नहीं बता पाते हम यहाँ. हमारे पास एससी का सेंसस है, हमारे पास एसटी का सेंसस है, लेकिन ओबीसी का सेंसस हमारे पास नहीं. इसलिए आजकल हम देखते हैं कि राजनीति में कास्ट वाइज सेंसस की बात वो जरूरी है. देन from other groups, the number is 37.58 lakhs. Their portion is 40%. And remember, there are only 12 lakh students from northeastern part of India. लगभग 9-10 स्टेट है वहां. अपार्ट फ्रॉम सेवन सिस्टर, आसाम सबसे बड़ा है, मेघालय है, लेकिन वो सारे 9-10 स्टेट मिलके कितना है, 12 लाख. मेरे ख्याल से हमारे किसी बड़े विश्वविद्यालय में इतनी संख्या होगी. बिग यूनिवर्सिटी लाइक बॉम्बे और बिग यूनिवर्सिटी लाइक पुणे, हमारे पुणे यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट हो सकता है कि 12 लाख,
या फिर मुंबई का 12 लाख हो सकता है, लेकिन देख लेना सर, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिला के भी सिर्फ 12 लाख। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइवर्स ग्रुप्स इन आवर एजुकेशन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं अदर माइनॉरिटीज की बात कर रहा था। हम बहुत चिल्लाते हैं ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हालात है। देख, only 21 lakh students belonging to Muslim community are in higher education. Only 21 lakh। क्या कहा जाता है हमें? आबादी तेजी से बढ़ रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किस चीज के बलबूते हम कहते कि ऐसा होगा वैसा होगा, जब हमारे गवर्नमेंट के पास यही फिगर नहीं कि कितने मुस्लिम हैं हमारे कंट्री में? नहीं ये फिगर सर। द सेम हैपेंस विद अदर क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट आल्सो डोंट हैव एनी फिगर। हाँ, क्रिश्चियन सिख का होगा क्योंकि पंजाब स्टेट अलग है, वहां पॉपुलेशन कैलकुलेट किया जा सकता। हाँ, ये बताया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना परसेंट मुस्लिम वोटिंग है, बट दैट इज नॉट द ओनली पैरामीटर फॉर हायर एजुकेशन। So these are the things, and remember, these two taken together, all minority taken together, देखो रफली कहा जाता है कि हमारे देश में लगभग 20% आबादी मुस्लिम, 20%। मान लीजिए कि हमारे देश में 140 करोड़ है, 140 करोड़ का 20% होता है 28 करोड़। 28 करोड़ में से सर देख लेना, सिर्फ 21 लाख आ। मैंने ओबीसी की बात की, एससी की बात की, एसटी की बात, कहाँ 70% बाहर है, कहाँ 71% बाहर है, कहाँ कितने बाहर है हमें पता नहीं है। एंड हाउ कैन वी अचीव अवर गोल्स इफ वी डोंट इन्वाइट देम टू कंट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग? अगर हमारे किसी ग्रुप के 70%, 75% स्टूडेंट्स अगर उच्च शिक्षा में आ नहीं पाते हैं, तो हम कैसे इमेजिन करें कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, या हम कैसे इमेजिन करें कि ये सबका साथ सबका विकास है? आई एम नॉट चैलेंजिंग दैट पॉलिटिकल स्लोगन, I'm just talking about inclusive education। सबको साथ लेने वाला एजुकेशन होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब यहाँ वो है कि टेकिंग ऑल टुगेदर। सर, यू विल वंडर टू सी हियर, ओनली 88,000 PWDs आर इन इंडो। मेरे पास एक दूसरे रिसोर्स पर्सन है, अखिलेश कुमार जी नाम के, तेजपुर से। वो बताते कि लगभग 30 प्रकार के डिसेबिलिटीज है, 30 प्रकार। हमारे लिए डिसेबिलिटीज क्या है? किसी का हार्ट ठीक नहीं है, किसी का पैर ठीक नहीं है, हंचबैक है, कुछ है, हम सिर्फ उनको कहते हैं। बट देयर आर ऑलमोस्ट 30 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। कान से कम सुनाई देता है, दैट डिसेबिलिटी। आंख से बिल्कुल दिखता है, दैट डिसेबिलिटी। अगर मेरा हाथ कम है मेरे हाथ में, दैट डिसेबिलिटी। इफ आई एम फॉल्टरिंग इन माई स्पीच, दैट इज माई डिसेबिलिटी। अगर मैं हकलाता हूं, that is again disability। If I am very slow in learning, that is again disability। मतलब कुछ फिजिकल, कुछ मेंटल, कुछ इंटेलेक्चुअल डिफरेंस आर देयर। लेकिन सर, हमारे लिए तो मोटे तौर पे क्या है डिसेबिलिटी? किसी का हाथ ठीक नहीं, किसी का पैर ठीक नहीं, किसी की आंख नहीं। सॉरी, मतलब उस डिसेबिलिटी की हमारे पास काउंटिंग ही नहीं है। इतनी सारी डिसेबिलिटीज, ओनली 88। एंड हियर ऑल्सो हमारे देश में 170 देशों से, बाहर के 170 देशों से हमारे यहाँ सिर्फ 46,870 स्टूडेंट्स were there in that particular year। और उसी साल हमारे बाहर कितने बच्चे थे? 5 या 6 लाख। लास्ट ईयर का फिगर है 7 लाख।
लास्ट ईयर का क्या फिगर है अपने पास? 7 लाख इंडियन स्टूडेंट्स वेर आउटसाइड. Let me move on right now. मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं करूंगा. आई विल टॉक अबाउट diversity in teaching positions also. As I told you, there are almost 16 lakh teachers, 15 lakh 97,660. Almost 16 lakh. Among them, 9 lakh male and almost 6 lakh 94 female. है भी देखो लगभग 2 लाख का गैप है. जेंडर भी डाइवर्सिटी का पार्ट है. नहीं, उसमें एसीज कितने हैं देख लेना. 1,48,000. अब कायदे से सर देख लेना, अगर ये 16 लाख है तो मेरे ख्याल से एसीज का रिजर्वेशन कहीं जगह 13 है, कई जगह 12 है, कई जगह 15 है. 24. कायदे से 2,40,000 होना चाहिए एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी. कितने हैं? 1,48,000. उसमें मेल फीमेल देख लेना. मेल 92,000, फीमेल 56,000. एसटी 8% पकड़ लो. 16 लाख 8% कितना हो? 96,000. 96,000 होने चाहिए. कितने हैं? 41,000. 8% के हिसाब से. देन मेल देखना, 23,000 मेल, 18,000 फीमेल. ओबीसी सबसे बड़ा फिगर है, 5,16,000. 30% रिजर्वेशन है. हालांकि आबादी ज्यादा है, बट रिजर्वेशन ही 27% होगी. ये देखना. पीडब्ल्यूडीज ओनली 10,000 एज सर्विस सर. हायर एजुकेशन में ओनली 10,000. मुस्लिम 90,000 दोनों. अदर माइनॉरिटीज ये ज्यादा है, देखो 14,000 है लगभग. सो दीज आर द फिगर्स. मैं थोड़ा नॉन टीचिंग की भी बात करता हूं. ऑल कैटेगरी टेकन टुगेदर 12,08,000. ऑल फ्रॉम रजिस्ट्रार टू प्यून. उसमें से मेल 6,80,000, फीमेल 5,27,000. 1 लाख का. एसी देखो 1,81,000 है. 95,000 मेल, 86,000 फीमेल. एसटी 56,000 टोटल. एसटी मेल 30, फीमेल 26. ओबीसी डेफिनेटली ज्यादा है, 3,45,000. 93,000 मेल, 15,000. फिगर तुम यहाँ गड़बड़ी शायद. एक मिनट, एक फिगर कम ज्यादा है यहाँ शायद. एक फिगर को मुझे मैच करना पड़ेगा इसको. यहाँ कुछ तो फिगर मिसिंग है यहाँ. एंड सी पीडब्ल्यूडी सी इथं पाच, फक्त 5,276 अपंग लोक उच्च शिक्षणामध्ये नॉन टीचिंग मध्ये. फक्त 5,276. मुस्लिम ओनली 41,000. अदर माइनॉरिटी 36,000. एंड ईडब्ल्यूएस उसके बाद में करेंगे. अब बात है तीसरा, आपके आप कह रहे थे ना कि क्या कारण, व्हाट आर द रीजन, व्हाट कुड बी द रीजन. The very first reason that you talked about, lack of knowledge of higher education opportunities. उच्च शिक्षा होती क्या है, उसके करने से क्या क्या फायदे होते हैं, आज भी हमारे बहुत सारे लोग को पता नहीं है. आज भी बोलते 10वीं हो गया बस हो गया काम कर लो, 12वीं हो गया बस हो गया काम कर लो. Why? Even today, majority people think that minimum literacy is enough. लिहिता वाचता येतं यानं बस झालं शिक्षण. काय करायचं? So, what opportunities are there? What
what things are available there is not known to the large number of people. That's why I say lack of knowledge of higher education opportunities is the big reason for non-inclusion of this. Then cost of pursuing higher education. ये पता नहीं कि आप किस कॉलेज से हैं नरेंद्र कुमार जी, आपका कौन सा कॉलेज है ये? अनम्यूट कीजिए अपने आप। श्री शिवाजी कॉलेज अकोला। श्री शिवाजी कॉलेज अकोला। अकोला, आपको दैट इज द ट्रेडिशनल कॉलेज, फाइन, इट इज ट्रेडिशनल कॉलेज। I know in traditional college and particularly in aided courses, the fees is very low, very less. But think the fees of professional courses in non-aided colleges, आप इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस देखना, मेडिकल कॉलेज की फीस देखना, नर्सिंग कॉलेज की देखना, फार्मेसी की देखना, it is very high, very high. And on the other hand, income of the people is getting low, getting down. Remember, बहुत सारी बातें हो सकती है इसको लेकर। बीपीएल की हमने डेफिनेशन ही बदल दी है। इसके घर में नल है वो बीपीएल में नहीं है, इसके घर में मीटर है वो बीपीएल नहीं है, इसको घर है वो बीपीएल नहीं है, जिसका बच्चा स्कूल में जाता है वो बीपीएल नहीं है। मतलब हमने उसकी डेफिनेशन बदल दी। नल सरकार देता है, घर सरकार देता है, बिजली सरकार देता है, स्कूल फ्री है। इट डज नॉट मीन दैट दैट फैमिली हैज कम आउट ऑफ दिस पॉवर्टी लाइन। नो, किसी फैमिली को पॉवर्टी लाइन के ऊपर आगे हम तभी मानेंगे जब वो अपने बलबूते सारी चीजें कर सकता है। दैट फैमिली अर्न इनफ टू हैव ऑल दिस फैसिलिटीज देयर। अगर गवर्नमेंट नल कनेक्शन देती है और कहती है कि ये बीपीएल से ऊपर निकल गई, अगर गवर्नमेंट लाइट कनेक्शन देती है और कहती है कि निकल गए, अगर गवर्नमेंट किसी योजना के तहत आवास देती है, घर देती है और कहती है कि निकल गए, ना, उसको वहां से हमने क्या मराठी में क्या कहते हैं, तो सपोर्ट दिला फक्त काय बैसाखी कुबडा दिले। दैट इज नॉट एम्पावरमेंट। मैं उस फैमिली को एम्पावर मानूंगा, उस फैमिली को कहूंगा कि वो बीपीएल से ऊपर निकले। मान लीजिए कि मैं जब स्कूल गोइंग था तो मैं मेरे फैमिली को कोई काम करने वाला नहीं, मतलब नो गवर्नमेंट सर्वेंट, माय पेरेंट्स वेर लेबरर्स इन फार्म, I had only house and my name, no tap connection, no light connection, but somehow the family got education. Now they have got all their facilities with them, with their own earned money. अगर किसी फैमिली को गवर्नमेंट बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करते, उसको ये चीजें अपने बलबूते पे खरीदने पर अगर ला सकती है, तो दैट इज एम्पावरमेंट। लाडली बहना स्कीम से एम्पावरमेंट नहीं होता है सर, दैट इज सपोर्ट स्कीम ओनली। हमें फर्क करना पड़ेगा। दैट इज द लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम ओनली। 80 करोड़ जनता को राशन देना, दैट इज द लाइवलीहुड सपोर्ट ओनली, जगण्यासाठी त्यांना काही आधार दिला। दैट इज नॉट बीपीएल. We are not raising them outside the, we are not raising them outside the, above the poverty line. And the thing is that on one hand, the cost of higher education is growing up, and on the other hand, people's earning are getting down. कल ही सुन रहा था मैं कि इवन मिडिल क्लास में लोग छोटे छोटे कर्जे ले रहे हैं। देखो इसमें बहुत फर्क है। मार्केट का रिकॉर्ड था लास्ट ईयर का, मिडिल क्लास कार की खरीदी कम हो रही है, लग्जरियस कार की बढ़ रही है, BMW ये बाकी कार की बढ़ रही है, ऑडी की बढ़ रही है, मर्सिडीज बेंज की बढ़ रही है। लेकिन जो स्मॉल साइज कार थे ना, 5 लाख के बीच में आने वाले, 6 लाख के बीच में आने वाले थे, इसके कम। इसका मतलब क्या है, लोग 5-6 लाख की कार लेने का उसका इनकम नहीं।
अगर मैं 50 लाख का कर्ज लेता हूं तो इसका मतलब मैं घर ले रहा हूं, मैं कोई इन्वेस्ट कर रहा हूं, कहीं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूं। लेकिन मैं 50,000 का 1 लाख का कर्ज ले रहा हूं, इसका मतलब मेरे मेरे रोज के खर्चे चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। These are the government figures, not on my own. What does it point out? ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि लोगों का इनकम कम हो रहा है। At the same time, it is pointing out towards the inequality in the distribution of the wealth. चलो फिर आगे की बात करो। नेक्स्ट रीजन, that is geographical distance and language barrier. ये सारे कोई है? यस सर। कौन आ गए? आप ही आ गए, बाकी सारे कहाँ गए? पंजाबराव देशमुख यांनी काढलेले कॉलेजेस आहेत हे. Where are the people? You all belong to the Bahujan Samaj, what we say. सबका सर आपके कैमरा ऑन रखिए, क्या दिखोगे? आप ऑन रख सकते हैं. Another reason is geographical distance and language barriers. These are two different things. The same AISH report says that in India there are 31 colleges for 1 lakh eligible population. Eligible population क्या है? Population lying between 18 to 23. ये रिपोर्ट क्या कहता है कि हमारे देश में ऑन एवरेज 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन के लिए 31 कॉलेजेस, महाराष्ट्र में 34 है, बेटर देन एवरेज. एज यू गो इन साउथ द कंडीशन इंप्रूव. आप जैसे जैसे साउथ में जाओगे, तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में, वहां संख्या अच्छी एज पर एलिजिबल पॉपुलेशन. इसलिए आप देख लेना, ये महाराष्ट्र से बेटर कंडीशन अब तमिलनाडु की हो चुकी है, महाराष्ट्र से बेटर कंडीशन अब केरल की, कर्नाटक की हो चुकी है. ऑन द अदर हैंड, as you enter in the central India, the things become or things begin to worsen. I repeat what I said. At national level, there are 31 colleges for 1 lakh eligible population. In Maharashtra, the number is 34, but in Bihar, it is 10. महाराष्ट्र में अगर 1 लाख बच्चों के लिए 34 कॉलेज है, तो बिहार में वही स्थिति बन जाती है, बिहार में 1 लाख के लिए 10 कॉलेजेस. हम जानते हैं कि बिहार इज वन ऑफ द बिग स्टेट्स ऑफ इंडिया. पॉपुलेशन के हिसाब से मेरे कैसे तीसरे चौथे नंबर पे है. तीसरे नंबर पे तो आराम से है. नंबर 1 यूपी, नंबर 2 महाराष्ट्र, मे बी नंबर 3 वेस्ट बंगाल, नंबर 4 इज नंबर 4 तमिलनाडु, नंबर 5 बिहार. हम लोकसभा के हिसाब से जाएंगे. बिहार में 40 है. मेरे ख्याल से तमिलनाडु में 39 आर ओनली 39. यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 48. मतलब इतना बड़ा स्टेट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, एंड ओनली देयर आर 10 कॉलेजेस फॉर 1 लाख लिविंग पॉपुलेशन. इट मीन्स दैट कॉलेजेस आर ज्योग्राफिकली डिस्टेंस्ड, एक दूसरे से दूर है. मैं आपको एक फिगर यहां और दे दूं. हिंदुस्तान में बेंगलोर एक ऐसा सिटी है जहां 1000 से ज्यादा कॉलेज एक ही सिटी में है. Bangalore is the city where we have the largest number of colleges in one city. और बाजू में पटना है, मुजफ्फरपुर है. This is one reason. If colleges are not there, no access है. Another language barrier. ये बहुत बड़ा इशू है. उच्च शिक्षा में लोगों को आने से हमारे अंग्रेजी बहुत हद तक रोकती है. हमारे बच्चों के पास अंग्रेजी का वर्केबल नॉलेज ना होने के कारण
वो ना 10वीं पास कर पाते हैं ना 12वीं पास कर पाते हैं। और कभी कभी फर्स्ट ईयर का जनरल इंग्लिश फेल हो जाता है, तो फिर वो तो लौट के असाइनमेंट। Language is the tool of communication, but English as a language is becoming here a barrier, hindrance. इंग्लिश के चलते भी हमारे बहुत सारे युवा उच्च शिक्षा तक नहीं आ पाते। आपका बड़ा कॉलेज, आपके कॉलेज में जूनियर कॉलेज में अटैच होगा, कभी वक्त मिला तो जूनियर कॉलेज का रिजल्ट देख लेना। मान लीजिए कि 1000 बच्चे आपके पास एनरोल थे 12वीं के लिए, उसमें से 900 पास हो गए और 100 फेल हो गए। गारंटी के साथ कहता हूं मैं, उस 100 जो फेल हुए उसमें से 80% इंग्लिश में फेल हो, मतलब लैंग्वेज बैरियर। देन ये तो अब सारे लोग जानते हैं, पुअर एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ मेनी हायर एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब हमारे जो प्रोग्राम हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, जो 4 करोड़ 33 लाख है ना, उसमें से 80% स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन यूजी प्रोग्राम ओनली, इन यूजी ओनली, BA, BCom, BSc, BSc Nursing, BE, what it may be. Only UG program. And out of those also, लगभग 40% are enrolled in BA, BSc, BCom programs. और हम जानते हैं कि अब BA, BCom, BSc करने से बच्चों को कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। वो जमाना चला गया सबका सर, जब नॉन मैट्रिक को पकड़ के भी पुलिस में लेके जाते थे। आपने ऐसे भी देखे हो कि जो थम्सअप वाले थे उनको भी पुलिस में मिलते में लेके जाते थे, चलता था। शायद आपने ऐसे भी टीचर देखे होंगे सर प्राइमरी में, जो नॉन मैट्रिक थे उनको पकड़ के टीचर बनाया गया, बाद में मैट्रिक करवा ली, बाद में सारी चीजें करना। बट दो अच्छे दिन आर गॉन। अब हमें क्लार्क भी बनना है तो डिग्री लगती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते। इसलिए मेरे ख्याल से लास्ट ईयर में कर्माकर सर को सुन रहा था मैं, हमारे स्टेट के स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोई किसी पद पे है, मेरे ख्याल से नितिन कर्माकर। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि आप हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज में संख्या कम हो रही है और प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं। इंजीनियरिंग, नर्सिंग, नर्सिंग में तो देखो हाल के 5 सालों में नर्सिंग कॉलेज की संख्या कितनी बढ़ गई है, फार्मेसी की कितनी बढ़ गई है। हालांकि इंजीनियरिंग कम हो रहा है लेकिन बाकी सारे बढ़ रहे हैं। Why? We are facing the want of student in classroom, in enrollment. क्यों ऐसा हो रहा है? बच्चे तो ज्यादा पास हो रहे हैं। The students are going towards ITI, GTI, polytechnic, pharmacy, nursing, so on and so forth. Why? Because somehow those courses are able to generate a kind of employment. कुछ ना कुछ काम मिलता है उन्हें। हमारे आर्ट्स का बच्चा क्या काम करेगा? BA करके, BCom करके, BSc की कुछ नहीं। दिस इज अगेन अ रीजन। हमारे बहुत सारे कोर्सेज, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खो चुके हैं। दैट्स व्हाई, इसीलिए अब CBCS के तहत हम SEC लाए हैं, स्किल एनहांसमेंट। अनदर रीजन, एडमिशन प्रोसेस सर। एडमिशन प्रोसेस इज द बिग इशू अगेन। ये भी हमारे लिए बड़ी इशू। सबका सर के पीरियड में एडमिशन प्रोसेस बहुत आसान था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में लेके चले गए, एडमिशन फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, फीस भर दी, हो गया एडमिशन। आज क्या है सर? कॉलेज का छोड़ो, यूनिवर्सिटी में हालत क्या है? पहले एंट्रेंस को अपियर हो जाओ, फिर उसका लिस्ट लगेगा, पहले जनरल लिस्ट, फिर कैटेगरी लाइट, फिर मेरिट लिस्ट, फिर क्या राउंड चलेंगे उसके, फिर कट ऑफ लगेगा। और ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन पता चलेंगी। आपको मेल देखना है, आपको सारी चीजें ऑनलाइन करनी है। मैं कहने का मतलब ये था कि ऑनलाइन प्रोसेस में हमने ज्यादा टेक्नोलॉजी लाने की वजह से भी बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते।
नहीं देख पाते। मैं ये जानता हूं कि हमारे इंडिया इज द कंट्री वेयर वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल यूजर, दैट इज ट्रू। इंडिया इज द कंट्री वेयर वी हैव द largest number of mobile users, but being able to use mobile does not mean that I'm able to do all the things online. हमारे बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल है, वो फेसबुक इस्तेमाल करेंगे, वो व्हाट्सएप करेंगे, वो बाकी सारी चीजें करेंगे, लेकिन उसी बच्चों को पूछो कि आपका ईमेल आईडी क्या है। दिस इज रियलिटी। हम ये जानते हैं ठाकरे साहब कि विदाउट ईमेल आईडी वी कांट यूज यूट्यूब, वी कांट यूज जीमेल और वी कांट यूज एनी अदर थिंग्स। लेकिन जो बच्चे के हाथ में मोबाइल है वो फेसबुक इस्तेमाल करता है, यूट्यूब देखता है, रील देखता है, शॉर्ट देखता है, उसको अपना ईमेल आईडी पता नहीं है। उसके मोबाइल में है लेकिन उसको पता नहीं है। व्हाट माय पॉइंट इज, मैं कहना ये चाह रहा था कि बीइंग एबल टू यूज मोबाइल does not mean that I am able to use everything online. And today many things are taking place like that. आप देख लेना, बीएड कॉलेज के एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस है, लॉ के लिए भी एंट्रेंस है, इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस है। इससे चलते क्या हो रहा है, काम किसका बढ़ रहा है, मतलब क्या कहते हैं, चांदी किसकी हो रही है, ये साइबर कैफे होनी। हालांकि a student, a literate student can do all these things at home with his mobile, but he doesn't know. He depends on the cyber cafe wala. And when the cyber cafe wala asks you your email ID, he doesn't tell you. Then the cyber cafe wala gives his own email ID there. कई केस में ऐसा होता है। एग्जाम्पल आपको मैं ज्यादा लेट दूं तो हमें ऑब्जेक्शनेबल होगा। लाडली बहना का क्या हुआ महाराष्ट्र, ये सारी चीजें ऑनलाइन करनी थी। हमारे कितनी माता बहनाएं मोबाइल इस्तेमाल कर सकती है, ऑनलाइन कर सकती है। ये किसने किया फिर, साइबर कैफे वाले ने। उसने उसको जो दिल में डाल दिया। अब देखो कितने बहुत सारे वो निकले। मेरा कहने का मतलब यह था कि टू मच यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बीइंग अ प्रॉब्लम फॉर मेनी स्टूडेंट्स और मेनी फैमिली। मैं फैमिलीज की बात कर, आपको ये भी बता दूं, इट इज पॉसिबल दैट मेनी ऑफ यू हियर मे बी हैविंग टू मोबाइल्स। आजकल ये भी चलन है सर, सबका सर, हम दो दो मोबाइल इस्तेमाल करने लगे। हमारे घर में हो सकता है कि 4 मेंबर्स है और 8 मोबाइल फोन हो, या 4 मेंबर के पास 4 अलग अलग व्हीकल्स हैं। लेकिन ऐसी भी बहुत सारे फैमिलीज हैं जहां पूरे फैमिली के लिए एक स्मार्टफोन था, एक फोन। सिर्फ फोन होना पर्याप्त है क्या सर? नहीं, उस फोन को चालू रखने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई भी तो होना चाहिए, उसके लिए बिजली घर में होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई होना चाहिए। चलो वो भी रह लिया, कर लिए। व्हाट अबाउट द डेटा? आज किसी भी मोबाइल कंपनी का मंथली प्लान डेटा के साथ 300 350 के नीचे नहीं है, मिनिमम 325 329, मैक्सिमम एनीथिंग। दैट डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ डेटा दे ऑफर यू ऑन द डेली बेसिस। 1.5 GB के लिए 330 340 तो आराम से है। इस फैमिली का इनकम उतना वो कहाँ से लाएंगे? And everything is turning online. So these are some of the reasons. And last reason is want of appropriate student support mechanism. ये भी सच है सर। आज भी उन बच्चों को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाते। इन कॉलेज आई एम टेलिंग, इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज उन बच्चों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है। किसी को दिक्कत आ गई, कोई बीमार पड़ गया, किसी को मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, किसी को एकेडमिक सपोर्ट की जरूरत है। हम करते तो है लेकिन एक सिस्टम नहीं बना है। एंड एट द वांट ऑफ दैट मेनी स्टूडेंट कैन नॉट कम्प्लीट।
So these are some of the reasons. Now let me go ahead. अब NEP क्या क्या करने की बात करते हैं. So far I told you two things. The present status of diversity or present status of inclusion of diverse groups in higher education. आज हमारे हालत क्या है, हालात क्या है हायर एजुकेशन के इस डाइवर्स ग्रुप को लेकर. फिर मैंने आपसे बात की व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, क्या क्या कारण है उसके. अब आएंगे हम मीनिंग. What NEP says or what NEP guides for government for more inclusion. NEP क्या कहती है, NEP क्या कहती है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, NEP कहती है. What is one? See, financial provision for SEDs. NEP कहती है earmark suitable fund for education of SEDGs. मैं SEDG वर्ड में बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं. सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. What the policy says, the government should reserve fund, earmark funds for the education of these groups. अब government means who, sir? Central government, state. हम जानते हैं कि एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट फॉल इन द कंकरेंट लिस्ट 76-76 तक, 76-77 तक एजुकेशन वाज द स्टेट सब्जेक्ट. हम जानते हैं ना कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट की रेलवे होती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की एयर सर्विस होती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की डिफेंस सर्विस होती नहीं है. नहीं होती. ये प्योरली या स्टेट गवर्नमेंट का फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट होता नहीं. ये सारे सेंटर के सब्जेक्ट. लेकिन कुछ सब्जेक्ट है स्टेट के, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये महाराष्ट्र सरकार ही देती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. एंड सम सब्जेक्ट्स आर देयर वेयर बोथ हैव इक्वल शेयर. जैसे शिक्षा. अब देखो, स्कूल शिक्षा पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट देखती है और उच्च शिक्षा दोनों देखते हैं. Now, the NEP expects that these governments should fix a fund, should reserve a fund, should earmark fund for the education of the citizens. ये हम नहीं कर सकते थे, ये गवर्नमेंट का काम. Second thing, developing SEZ for more universities and colleges. SEZ, हम जानते हैं कि SEZ का मतलब क्या था हमारे लिए पहले, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. बट यहाँ स्पेशल एजुकेशन जोन्स. It means the governments and NEP have realized that there are some areas, there are some pockets in India where the spirit of education is less. हम कहते हैं ना कभी कभी हमारा जिला इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है, हमारे जिले में कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है. Similarly, in our country, there are some regions, there are some areas where less number of education institutes are there, less number of universities, less number of colleges are there. So the policy says that government should identify such SEZ and should open there more colleges and more universities. The NEP does not stop here. NEP आगे जाके बात कहती है कि not only government but the philanthropist should also come forward. Philanthropist means who? The people or group of people who want to work for social welfare. समाजसेवी व्यक्ती किंवा संस्था यांनी पुढे यावं, त्यांनी फेलोशिप द्याव्यात, त्यांनी स्कॉलरशिप द्याव्यात. आणि आणखी चांगले असेल तर त्यांनी सुद्धा युनिव्हर्सिटीज कॉलेजेस काढावेत. Here, NEP is inviting private sector in higher education. In the beginning, I told you there are 473 private universities, purely private universities, where financial management, academic management is done by the private people. So this is one. Second thing, the policy says to government
that in colleges and universities, local language be used as a mode of instruction. मतलब teaching should take place. Higher education teaching should take place in regional language, in local language. अब तक क्या है, हम साइंस इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हम इंजीनियरिंग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हम मेडिसिन इंग्लिश में पढ़ाते हैं. The policy says no. Even these courses must be taught in regional language or local language, or at least bilingual. Last, what support service should be? Technology tools should be there, but they should be easy to handle. बहुत सारी चीजें करनी जरूरत है. Next, now what NEP asked for are asked to colleges and universities. इससे पहले जो हमने कहा वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करती है. अब ये एक्सपेक्टेशन कहां से? हम जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज क्या कहती हैं? मेक एडमिशन प्रोसेस इजी एंड इंक्लूसिव. Easy and inclusive. When we are enrolling our student, reservation process should be followed here. Where intake is high and application are less, there is no issue of reservation policy. जर तुमच्या कॉलेजचे इंटेक 1000 असेल, ऍप्लिकेशन 800 असतील, तर तिथं रिझर्वेशनचा प्रश्न आहे. But when your intake is 1000 and you receive 1500 applications, then we have to be very careful about reservation. Then, मैं जिस सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा था ना, सोशियो इमोशनल एंड एकेडमिक सपोर्ट टू द स्टूडेंट थ्रू डिफरेंट काउंसलिंग लाइक मेंटरिंग थिंग्स. Then, developing bridge course for students from SEDGs. जो बच्चे SEDG ग्रुप से आते हैं, वो बच्चे हो सकता है कि थोड़े से सिटी के बच्चों का मुकाबला ना कर सके उस लेवल के नाम. And the want of facilities for them. तो ऐसे बच्चों को सामान्य लेवल पर लाने के लिए कॉलेजेस ब्रिज कोर्सेस बने. Then, as I told you, develop more degrees in Indian languages and Bangalore. Then, sensitizing human resources on gender and identity issues. लड़कियों की प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दो. ठाकरे साहेब आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे, it is compulsory that there should be separate toilet box, there should be ramps, there should be separate toilet box for PWDs. But in how many colleges these facilities are available is a big question. And if those facilities are there, how many of them are in functioning? Again another issue. मैं आपको सच बताऊं, इस प्लेटफॉर्म पे, the college where I used to work before I joined this, there was no facility for girls. No facility. Afterwards we constructed the thing. हम पहले पुराने बिल्डिंग में थे, जो किराए से थे, वहां लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं था. केवल पेशाब के लिए जगह नहीं थी, बाकी तो चीजें छोड़ो. In college, you can imagine what are the things in schools. There are some government schools where even the ladies from the staff don't have such facility. अगर आम लोगों के लिए नहीं तो सिर्फ PWD की बात क्या करेंगे? PWD abled toilet box. These facilities should be there. And last thing here, there should be non-discrimination and anti-harassment rules about children. These are the guidelines for colleges and universities. Now, let me come to the last point. See, I'm coming to the third point now. In the first point, I told you what is the status of the inclusion of the diverse groups in higher education. Second thing, I told you what NEP says or what instructions or what expectations the NEP have from governments
and university colleges. But remember, even having so many things, even having so many things said there, inclusion of all diverse groups is not so easy. इतने सारे लोगों को, जनरल की भी बात करूं तो 28.4 हमारा GR है, मतलब 71.6% youths of our India falling in the age group of 18 to 23 are outside higher education. इतने सारे जो बच्चे बाहर हैं, उनको हायर एजुकेशन में लाना आसान काम नहीं है. Why is it so difficult? The first thing, the first reason is issue of employability in the higher education program. ये सबसे बड़ा इशू. बहुत सारे बच्चे सीधा सवाल पूछते हैं, पढ़ के भी क्या करेंगे, कहाँ नौकरी लगने वाले. BA करून काय करणार, BCom करून काय करणार. आमच्या काळात असं म्हणायचे, BCom करून बेकाम व्हायचंय का. मतलब जब बच्चों को कोई उम्मीद नहीं दिखती जॉब की, एनी काइंड ऑफ जॉब. अब गवर्नमेंट जॉब तो भूल ही जाइए सर. अब शायद लार्ज जनरेशन थी जो गवर्नमेंट जॉब में थोड़े आसानी से आ गए. दैट टू बिकॉज ऑफ सेमी गवर्नमेंट थिंग्स. ये सवाल मैं भी कभी कभी अपने आप से पूछता हूँ, बिकॉज आई आल्सो वर्क इन कॉलेज एज ए लेक्चरर एंड प्रिंसिपल. कभी कभी मेरे दिमाग में सवाल आता है, अगर ये प्राइवेट संस्थाएं ना होती, उनके कॉलेज ना होते, तो हम में से कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में जा पाते, गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब कर पाते. हम में से कितने लोग MPSC क्लियर करवाते. बड़ा सवाल है. इन लोगों के चलते पीपल लाइक पंजाब राव देशमुख, पीपल लाइक कर्मवीर भावराव पाटिल एंड मेनी पीपल लाइक them, they took education to the villages. Not only school education, higher education also. And because of them, we people could have education and could have jobs. That hope, that optimist picture was there some 10 years back, some 20 years back. आज हालत क्या है सर? आपके इंस्टीट्यूट के कई लोगों से मैं मिल चुका हूँ. मैं अमरावती गया हूँ, मैं चिखली गया था पिछले हफ्ते में, आपके चिखली कॉलेज में. मुझे वहां के प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि सिर्फ 4 लोग फुल टाइमर बचे हैं, बाकी सारे फेल. मतलब आपके इंस्टीट्यूट में मेरे ख्याल से मोर देन 100 सीट्स आर वैकेंट, मोर देन 100. आपके पूरे इसमें तो ज्यादा हो सकते हैं. 100 से ज्यादा लोग आपके पास वैकेंसीज बाकी है. वैकेंसीज नहीं भरी जाएगी किसी न किसी रूप में, तो वाई शुड वी गो फॉर हायर एजुकेशन. BA BCom BSc क्यों करूं? मतलब हमारे हायर एजुकेशन प्रोग्राम BA BCom BSc अदर थिंग. देखो आपको ये भी पता है, IIT वालों को, IIM वालों को जो पैकेज पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा. इवन दे आर फेसिंग इश्यूज. अगर मैं आपको प्रेजेंट स्टेटस बताऊं, अगर मैं आपको कल की जो घटनाक्रम बताऊं, आपको पता है कि अमेरिका ने डिसीजन लिया है H1B वीजा टू बी देयर फॉर 1 ईयर. अगर अमेरिका में आपको 1 साल रहना है तो अब आपको 88 लाख रुपए देने हैं. कल तक ये 6 लाख थे. देर आर आदत मतलब देर आर 3 लाख स्टूडेंट देर, 3 लाख स्टूडेंट हु आर वर्किंग देर. They went there as a student and they can live for 2 or 3 years and work there. ये फैसिलिटी, एक मैकेनिज्म बनाया गया था कि ये बच्चे यहाँ से बहुत सारा एजुकेशन लोन लेके वहां जाते हैं पढ़ने के लिए. तो ये लोन की रकम रिकवर करने के लिए उन बच्चों को वहां अगले 2 साल 3 साल काम करने की फैसिलिटी मिलती थी. वो कंपनी वो पैसा भरती थी. कल ट्रम्प चाचा ने वो डिसीजन लिया है कि 88 लाख भरने पड़ेंगे. कितने बच्चे भर पाएंगे? And if they can't, they have to come back.
उनको वापस भेजा जाए। ऐसी बात नहीं कि वो वापस आ गए तो उनके लिए यहाँ जॉब रेडी है। फिर दिस इज द पिक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मार्केट टुडे। मतलब somewhere we can say that our education programs are unable to generate employment, even self-employment. अब गवर्नमेंट के फिगर कुछ भी हम उस पर बात नहीं करेंगे। कहा जाता है कि 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मुद्रा लोन क्या था कि कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो और नौकरी देने वाले बनो। 40 करोड़ या जो भी फिगर होगा, इसमें से कितने लोगों ने अपना खुद का बिजनेस लगाया होगा, कितने दूसरे लोगों को जॉब दिया होगा। एवरेज उसका निकल के आता है सर 25,000, 10,000 से 20,000 के बीच में ही पर हेड लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पर हेड 10,000 में कौन सा बिजनेस लगा पाओगे सर? चाय का ठेला भी नहीं लगा पाते 10,000 में। Anyway, I'm not going to make it political. I'm just trying to tell you that our education programs have lost employability. This is a big issue, and because of that, many people not come. सर हालत ये कि मान लीजिए मैं एक पान का ठेला मैं लगाता हूँ। अगर मेरा बच्चा कॉलेज में जाके कल बीए करता है, बीकॉम करता है, बीएससी करता है, उसको कोई और तो जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन उसको मेरे पान के ठेले पर बैठने में शर्म आएगी। ये भी नहीं काम करेंगे। पढ़ लिख के बच्चे काम करना नहीं जानते, मैनुअल वर्क करना नहीं जानते। अब जरा अंग में काम होता दे डोंट वन। सेकंड इशू इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। मैंने शुरू के स्लाइड में कहा थी मैं एससी का जीआर दे पा रहा हूँ, मैं एसटी का जीआर दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं ओबीसी का जीआर नहीं दे पाता हूँ। मैं माइनॉरिटीज का जीआर नहीं दे पाता हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी का जीआर नहीं दे पाता हूँ। क्यों नहीं दे पाता हूँ? कि मेरे पास डेटा ही नहीं है कि मेरे देश में कितने ओबीसी है, मेरे देश में कितने माइनॉरिटीज है, और बहुत सारे लोग इसमें हैं। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम ओबीसी और माइनॉरिटीज को एक साथ करते हैं तो इट इज मोर देन 60%। अगर हमारे देश के 60% लोगों को अंदर लाना है हायर एजुकेशन में, मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरे पास फिगर नहीं है। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, ठाकरे साहब आपके घर में शादी करनी है, आपको सारे लोगों को खाने पे बुलाना है, आपके पास पैसा है, मेन्यू रेडी है, लेकिन आपको यही पता नहीं कि कितने लोग आने वाले हैं। आप नहीं कर पाओ। सेम थिंग इज विद द गवर्नमेंट। Government doesn't have figure of OBCs in India. Government doesn't have figure of minorities in India. Government doesn't have figure of PWDs in India. If the figures are not there, how can we plan something for them? ये सबसे बड़ा इशू है। एंड फाइनेंशियल कंसर्न मैंने आपको शुरू में कहा, आजादी के 75-79 साल के बाद हम सिर्फ 28% जा चुके हैं। ये पॉलिसी कहते हैं कि बाय 2035 वी हैव टू रीच द जीआर एट 50%। आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा। ये पॉलिसी कहती है कि 2035 तक हमारा जीआर हमें 50% करना है। मतलब आज जो है उसका लगभग डबल से थोड़ा सा कम करना है। आज 28 है, हमें 50 करना है। 1168 यूनिवर्सिटीज, 45,000 कॉलेज और 12,000 एसीआई है। इसके चलते हम यहां तक आ पाए हैं। तो फिर हमें इससे डबल लोगों को अंदर लाने के लिए डबल लगेंगे कॉलेज, फिर इतने कॉलेज और लगेंगे हमें, इतने यूनिवर्सिटीज और लगेगी, इतने ही एसएआई लगेगी। क्या गवर्नमेंट आने वाले 10 साल में इतने यूनिवर्सिटीज, इतने कॉलेजेस बना पाएगी? मैं आपको ये भी बता दूं सर, नरेंद्र कुमार ठाकरे जी, हमारे 45,000 कॉलेज में से लगभग 32,000 कॉलेजेस सिंगल फैकल्टी कॉलेजेस, single faculty college, only arts college, only commerce college, only science college, only nursing college, only DED college, only BED, single faculty college. ये पॉलिसी क्या कहती है? We will turn every single faculty college into multi-faculty. That's nice. अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिसीजन है।
नरेंद्र ठाकरे जी, अगर आपके कॉलेज में आप फार्मेसी खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इज वेरी लिबरल। आप सिर्फ प्रपोजल भेजो, आपको दिया जाएगा नर्सिंग कॉलेज। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी आपको ये सेल्फ फाइनेंस मोड पे चलना पड़ेगा। टीचर बनने के लिए हम पैसा नहीं देंगे। बिल्डिंग के लिए तो पहले भी नहीं देती थी, अभी भी नहीं देंगे। किताबें आप ही देख लो, बाकी आप ही देख लो। फाइनेंशियल कर्ज। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ नरेंद्र जी। अब आप जैसे कॉलेजेस, स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट करती है। हम अपने दिमाग में से निकाल डाले ठाकरे जी कि हमें सैलरी यूजीसी से आती है। नहीं, मैं जब शुरू में ज्वाइन किया तो मुझे भी यही बताया गया कि हमें सैलरी यूजीसी से आती नहीं आती। हमें सैलरी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही देता है। यूजीसी से क्या मिलता है सर हमें? जब नया पे कमीशन आता है, लिसन टू मी केयरफुली, जब नया पे कमीशन आता है तो ओल्ड पे और न्यू पे का जो डिफरेंस होता है ना, उसका 50% यूजीसी देती है। आपको याद होगा आपका आरएएफ 5 हिस्से में आया था। स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा अलग। याद है आपको? इफ यू आर वर्किंग ऑन एडी बेसिस, 7वें वेतन आयोग का जो आपका आरएएस बन रहा था तो 5 सालों में आ गया और 5 अलग अलग हिस्से में आ गए। स्टेट गवर्नमेंट का एक पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट। कहने का मतलब ये आरएएस, दो पे स्केल के बीच का उसका डिफरेंस, वो भी पहले 50% ओनली यूजी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट थी, बाकी सारा स्टेट गवर्नमेंट को खर्च। नया कॉलेज बन गया, उसको ग्रांट दे दी स्टेट गवर्नमेंट ने। नया पे स्केल आ गया, स्टेट गवर्नमेंट ने। और अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र कुमार जी, जब से जीएसटी आया है तब से स्टेट गवर्नमेंट कफल्लक हो चुके हैं। अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है, एक्साइज टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है, कारपोरेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है। एलबीटी थे, चुंगी नाकाम जिसको कहते, दो खत्म हो गए। जब जीएसटी भी होती ना सर, हम जानते हैं कि जीएसटी में 2 पार्ट होते हैं, एक सेंटर का, एक स्टेट का। लेकिन सबसे पहले वो कहा जाता है, सेंटर के पास जाता है। एक्सपेक्टेशन ये है सर, 2017 में नीति आयोग ने रिकमेंड किया था कि जितना टैक्स कलेक्ट होता है सारे देश में, उसमें से 41% स्टेट को वापस जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट 35% दे रही है अभी, वो भी वक्त पे नहीं देती। सबका साहेब, फक्त सध्या दोनच गोष्टी जीएसटीच्या अखत्यारीत नाहीये. कुठल्या? पेट्रोल आणि दारू. या दोनच गोष्टी सध्या जीएसटीच्या अखत्यारीत नाहीये. यावर जीएसटी लागली त्या वस्तू स्वस्त होते. आज स्टेट गव्हर्नमेंटला तोच मोठा आधार आहे. नाहीतर बाकी सगळ्या गोष्टीसाठी स्टेट गवर्नमेंट हैज टू लुक टुवर्ड्स सेंटर. मैं सेंटर वाले सलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मुद्रा में जाके चलो दे दिया करते. कहने का मतलब ये है, as I told you, 70% students are in state government. 94%, sorry, 97% teachers are in the state government. हम लोग 97% teachers out of 16 lakh are working with the state in colleges and university. कितना लोड है देख लेना, और पैसा कोई नहीं. मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट सर, आपको आप प्रिंसिपल साहब से पूछ लेना, आपके पास अगर ग्रुप में प्रिंसिपल है तो, कि उनको पूछना कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपको एक आधी रूम बनाने के लिए पैसा दिया है? स्टेट गवर्नमेंट 1 रुपए भी नहीं, उस कंडीशन में ही नहीं हूं. हमें स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सैलरी देती है. एक पेपर लेने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देता. हमें वो नॉन सैलरी से, अदर फीस, ट्यूशन फीस, इसमें से मैनेज करना पड़ता है. सेकेंड थिंग, रिक्रूटमेंट. मैंने कहा आपसे ऑलमोस्ट 40% सीट्स आर इवन टुडे वैकेंट.
It's a big challenge. If teachers are not there, how can we include more students? If colleges are not there, how can we include more students? If infrastructure is not there, how can we include more students? And last thing, socio-political environment for girls, minority, northeastern and forests. See that? Socio-political environment. क्या हमारी लड़कियां सेफ हैं एजुकेशन? आपको पता है मेरे ख्याल से लास्ट ईयर कलकत्ता में एक इंसिडेंट हुआ था। कलकत्ता के कोई मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर पे रेप करके मारा गया था। आर दे सेफ? आई नो दिस वाज एन एक्सेप्शन। हर बार नहीं होता ये, लेकिन एक एक्सेप्शन भी सारा माहौल बिगड़ देता है। सेम थिंग अबाउट माइनॉरिटी ऑल्सो। आर माइनॉरिटीज सेफ इन इंडिया? वो सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, पारसीज हो, आर दे सेफ? आई डोंट नो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स, ये भी देख लेना। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन ज्योग्राफी डिफरेंट, देयरफॉर दे आर नॉट लाइक अस बाय अपीयरेंस। हो सकता है कोई थोड़े से नेपाल जैसे दिखे, चाइना जैसे दिखे, उनको बहुत रैगिंग का सामना करना पड़ता है। लास्टली फॉरेन स्टूडेंट्स, क्या फॉरेन के बच्चे हिंदुस्तान में आना पसंद करते हैं? मैंने कहा था 21-22 में 46,000 फेयर थे, 20-21 में 48,000 फेयर थे, and 19-20 में 50,000 फेयर थे। Every year we are fall of 2,000 students, foreign students। हमारे बाहर कितने जा रहे हैं? 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख। हमारे यहाँ कितने आ रहे हैं? 1,000। I don't say that this is the only reason why the boys are not coming in India, but let me cite one example and stop here। आपको शायद फरवरी की वो घटना पता होगी सर, कि ओडिशा में KIIT है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, and there are many students from Nepal, many students, एक दूसरे के रेफरेंस से। And one Nepali girl committed suicide because she was being tortured by someone. When she hung herself in the room, her body was taken out and these Nepali boys asked for justice. उन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, जवाब मांगा। तो कॉलेज को करना क्या चाहिए था? उनको जरा भरोसे में लेते, कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाते, उनकी बात सुन लेते। On the contrary, what the college did? All of them were suspended from the college. All of them were asked to vacate their hostels, and all of them were asked to leave the country immediately. सारे बच्चों को रेलवे स्टेशन पे लाके पट कर नेपाल के साथ। जब सोशल मीडिया पे बात नेपाल गवर्नमेंट तक गई, नेपाल गवर्नमेंट ने भारत सरकार को इंटरवेंट किया, तब जाके उनका सस्पेंशन विड्रॉ किया। If such things are taking place here with the foreign students, why will they come to India? These are issues. And lastly, but not all is black. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सारी चीजें इतनी बुरी नहीं हैं। What we can do, what is the scope for improvement? One, हमें डिजिटल डिवाइड की तरफ ध्यान देना पड़ेगा सबसे बड़ी। अरे अगर हमें डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले सारे लोगों के पास ये टूल है क्या देखना पड़ेगा। सेकंड थिंग, रेगुलेटेड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट पार्टनर्स। प्राइवेट कॉलेज बनना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्राइवेट बनना दिया इसका मतलब गवर्नमेंट उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, जो चाहे वो करे, ऐसा नहीं चलेगा। The governments have to look into the proper things of the private. And lastly, there must be equity-based inclusion of SENSITIZATION. Equity-based. See, here is a picture. Here we have equality. It means equal support to all.
See, these are the three persons here, and for all of them, equal support is given. This equal support will not work. We need equity-based support. हो सकता है कि पहले वाले को सपोर्ट की जरूरत ना हो, दूसरे वाले को थोड़े सपोर्ट की जरूरत हो, और तीसरे वाले को ज्यादा सपोर्ट की हो. Equity based as per their needs. So this is what I had to say. Let me stop now here. So in short, I tried to put before you, I tried to share with you the things about diversity of students and their inclusion. In the beginning, I told you what is the present numbers, what are the present numbers, number of institutes and their enrollment there. Second thing, I also talked about what are the reasons of non-inclusion. In the third part, I discussed or I tried to put before you what guidelines NEP have for government and colleges, universities. And lastly, in the concluding part, I also tried to show what challenges are there. क्योंकि सब कुछ चंगा नहीं है. अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आई एम टर्निंग माई आई एम टर्निंग ब्लाइंड टू द रियलिटी. मुझसे अच्छी रियलिटी क्या है आप जानते हैं. What issues you face in college about students, about facilities, about staff, you know it well. So we have to first of all admit the problem. ये प्रॉब्लम है, पहले हमें इसको मान्य करना पड़ेगा, तब बात हो. थैंक यू. अगर इस प्रेजेंटेशन को लेकर किसी को कुछ अलग अपनी राय रखनी है या इसमें कुछ जोड़ना है, यू आर मोस्ट वेलकम. ओवर टू यू. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Participants, the forum is open for discussion or the question answer. If you have any kind of questions or the queries or some kind of observation also, you can please note down here. It will be very appreciable if you have any kind of questions. एक संगीता शेगावकर मैडम ने पूछा है, स्टेट प्राइवेट आर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस. स्टेट प्राइवेट आर यूनिवर्सिटीज and colleges are purely private. When I am talking about, when I am specifying universities, they are central universities, state universities and state private universities. आपको ये भी पता होगा what is the difference between central university and state university. जो यूनिवर्सिटी सेंटर पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है, जिसकी फंडिंग सेंटर करता है, हम उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं. जो यूनिवर्सिटी स्टेट के एक्ट से बनती है और जिसको फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, डेवलपमेंट फंडिंग, सैलरी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करता है, हम उसको स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं. और जिसका मैनेजमेंट भी प्राइवेट लोग करते हैं, और मैनेजमेंट इन द सेंस एकेडमिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी. कॉलेज में भी वही है. ग्रांटेड government colleges, aided colleges like us, and purely unaided or what we call permanent non-grant colleges or self-finance colleges, that is again variety. Yes, anything else? I think some people were facing issues. Anyway, अब तो सेशन खत्म हो गया, मैं वो देख भी नहीं पा रहा था. चलो कोई सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज लेट मी कंक्लूड इट. Yes, having any questions, either if there are no questions, then we can conclude. Please, anyone. Sir, please conclude. No question. Okay, Bedre sir, shall we conclude, sir, if you could permit? Yes. If there is no question, we can conclude it. Yes, sir. So on behalf of both the organizers, Shri Shivaji College of Art, Commerce and Science, Akola, and Sant Gadge Baba Amravati University Malvi Mission Teacher Training Center, I extend my sincere thanks to Professor Bedre sir on behalf of all the participants and the organizers for such an insightful session and very meaningful session to understand the ecosystem of our diversity, not only for the student but the institutional diversity also in our country. We are luckily thankful to you, sir. Really thankful to you. जाते जाते मैं एक फीडबैक देना चाहूंगा सर. Yes, sir. Please. पिछले सेशन में भी मेरी ये शिकायत थी और इस सेशन में भी शिकायत है. मैंने अतिक साहब से भी बात की आज मॉर्निंग में कि आपके कोर्सेस में पार्टिसिपेंट तो बहुत सारे जुड़ जाते हैं,
लेकिन एक्टिवली और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट या 2-3 ही लोगों का होता है, तो बाकी लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, सामने कोई ना कोई होना चाहिए. Anyway, thank you one and all. Good night. I am leaving, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Namaste. We will definitely take your Please. Thank you.